Okay, so we are going to go live on YouTube and we are live on Insta. Let's see. Live तो जाना चाहिए वैसे, क्यों नहीं जा रहा? और ही हो रहा है. Discard. I think मैं कब से लाइव जाने की कोशिश कर रही थी. ओह, ये तो फोटो निकाल रहा है. फोटो थोड़ी बोला था मैंने लाइव बोला था कि क्या हो रहा है. एक सेकंड पीपल, प्लीज वेट बिफोर आई स्टार्ट. एक मिनट पीपल, सॉरी, पता नहीं मेरे को क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है. तो गो लाइव ऑन इंस्टा. When did I go? Yeah, finally it's working. Hello, hi. There's somebody on Zoom already. Okay, got it. 1 second. Hi, ma'am. Hi. How are you? Just give me 1 second, yeah, because it just started after a month. It's taking me some time to get the hang of all of the 3 places that I have to go live. Okay. कैसे हो सब लोग? Oh, hi Insta people, hi Zoom people, hi YouTube people. कैसे हैं? 1 महीने के बाद भूल तो नहीं गए मुझे आप लोग? DM से तो नहीं लग रहा कि भूले हैं, but I'm guessing आप. Today I'm trying something different on Insta, some heart filter because of all the love and all. Failed an exam today. Sorry, already एक question आ गया है. हम hi Dhruv Sharma, hi user don't exist. हाय एच, पहले मैं सबको हाय बोल दूं बेटा, फोकस जिसका मैसेज आया है. और हाय ईशान सिंगराना, आप मुझे तो नहीं भूल गए. सॉरी, मुझे नहीं पता, बट ओके. लाइक एम आई सपोज, तुमको कैसे, क्या तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हें याद रखूं? मुझे याद नहीं आ रहा. प्लीज, सो अभी यू जस्ट डील विद इट. ओके, आई कैन नॉट स्टॉप एंड रीस्टार्ट. Let's like have the filter for now. I have to talk on YouTube. और जिनको questions है, please for God's sake यहाँ नहीं लिखना. यहाँ पे मैं सिर्फ 2-3 बार देखूंगी because मेरा हाथ the next day it really hurts the way I keep scrolling the chat and और YouTube पे क्या होता है कि वो question वही रहता है. It doesn't go anywhere. Unlike Insta where you mostly don't put the question and where it should be, and it's really hi Mohit Patel. मैं याद हूँ या नहीं? There are a couple of Mohits, so I'm not sure which one this is. हो भाई, इतना बता करने के बाद भी भूल गए यार. लड़कियों की मेमोरी. ईशान 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 कौन? यार मेरे कितने क्लाइंट्स होते हैं. हाउ इन द वर्ल्ड यू विल पीपल एक्सपेक्ट मी टू रिमेम्बर? प्लीज, there are like, unless you're in touch with me maybe weekly or by the way, not many of you all remembered my birthday. Let me just tell you all, ठीक है? So ये जो आप लोग बहुत do we have a coding community on Discord? I think so we have something for coding, but do contact Arshi and she. Okay, hi Balaji. Oh, Balaji remembered my birthday. So there are few people who actually remembered my birthday. So thank you, Balaji. Or sadly, I missed the last 2 impromptu lessons. I didn't do any. I did it 1 month back, so don't worry. It was very short and quick. And जिसने आपको, अच्छा, तो तुम, you think I should remember just because you called me a 22-year-old? Sorry, ऐसे compliments तो मिलते हैं, पर ये बात कोई याद रखने वाली है कि compliment किसने कौन सी वाली दी थी. So Dhruv, I'm good. How are you? So but so nice to see so many of you all. I was not expecting, to be very honest. मैंने सोचा 1 महीने के बाद, break के बाद, hardly anybody will show up, but I'm so happy to see you. Oh, okay, yeah, Mohit. Hi, Habib. So you have a question, or the one on Zoom. Beta, please write in case you don't want me to. Okay, wow. So many people joined us. Guess meeting group chat will also appear. Abhishek left. I don't know. Okay. Okay. If you have a question, please write on Zoom chat and YouTube chat. I prefer those two
rather than, and of course नहीं है कोई questions तो हम ऐसे ही क्या बोलते हैं गपशप कर सकते हैं. I can discuss about my life, and if you have a question and you want to unmute and ask me, that is also possible on Zoom. ठीक है? So do you want to write your question? I'm not taking your name just in case you want me to keep your privacy. So do ask, otherwise you can just okay. Let's first take the question. Good to hear that you're well, ma'am. I'm also good. I'm happy. Hi Mia. Hi Amstar. Hi Chinmay. Hi introvert and Tirthesh. Hi, I remember Tirthesh. Sarthak. I think I remember you. Surajbir, I remember you. And भाटी श्रेयस मारेगा हर बार. आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसका नाम आया और मैंने मिस प्रोनाउंस ना किया हो उसका सरनेम. So it's okay, ma'am. आज तो rant, I have to leave in 10 minutes. I actually, to be very honest, there was a rant last time, but it's been like I have not. Okay. So there was, I wanted to answer this question, but since Balaji loves my rants for some reason. So you know what? This is almost एक महीने पहले की बात है जब तुम नहीं आए थे. Balaji, तो क्या हुआ था कि there was this client who contacted me at 1:30 in the morning. Okay. And obviously I didn't see it, but he called me a couple of times. And so the next day I said to him that I understand that you have an urgent thing, but I don't think you should call anyone without permission, and you should not call them at such unearthly hours. I mean, agar se, if it's 1:30 anywhere in the world, it doesn't matter whether it's your country or any country, you have to check where the person is. And of course, at that time, I think I was still in Dubai, and I think a little bit, it was my 1:30 to 3 o'clock in India or something like that, right? So मैंने उसको यही बोला करके, I'm not a 24/7 क्या बोलते हैं helpline or something like that. So why don't you just let me know what is your issue and I'll take it up as and when. But he got really offended. He's like, and then I gave some client, मैंने बोला I'm going to travel. So I think so ऐसे कुछ था कि को correctly याद नहीं आ रहा था उस दिन क्या हुआ था. So I said, do you want the contacts? I gave the contacts and all. And I didn't like the way, and he didn't even thank me, didn't say please, nothing. So obviously, as you people know, I don't like that. When someone is helping you, even if they give you a contact and even if they are there for you for 5 minutes of your life, right? It doesn't take much to say please, thank you to someone. But he just got so upset with me and he's like, what did you do? What did you even do? So I'm like, you know what? I'm wasting my time. And guess what? He wrote on YouTube. I still have the snapshot. कि मैम के पास जाओ तो उनको मैनर्स, अरे मैनर्स तो सब में होनी चाहिए. अगर से आपके पास मैनर्स नहीं है फॉर इतनी सी भी मैनर्स नहीं, किसी को प्लीज या थैंक यू बोलने के लिए, यू शुड evaluate yourself instead of telling me that why am I so hell-bent on being a little bit proper. आप किसी से भी कभी भी मदद मांगते हो, हम तो हमारे स्टाफ के साथ भी पोलाइटली बात करते हैं, भले वो हमको we pay them a salary or whatever. इंसान का वो कैरेक्टर्स दिखता है, आप कैसे दूसरे से कैसे बात करते हो, आप कैसे एक दूसरों के साथ कैसे तुम्हारा व्यवहार होता है, it shows a lot about you. And he's like, she does, I am going through such a tough time. It doesn't matter what tough time you're going through. All of you all, please hear this. Just a simple, kindness from your side. If someone is there for you, and I was ready to help him. I told him also, I will take your case. Just give me some time. I'm traveling or some shit. He just got very hyper and he wrote on YouTube, which he deleted. But I took a snapshot and I kept it because I get it. And I was trying to understand. Also, from this, I try to understand, was I being a little harsh? Was I having a very tough day at work that I didn't like anyone calling me? And there are other people who call me anytime. Okay, like I'm some 24/7 helpline. I am not. Okay, but yet there are some really sweet children. जब मैं उनको बोलती हूँ, hey listen, it's not polite to call me anytime without permission. किसी को भी call करो, इंसान से पूछो, मैम, सर, या कोई भी हो, तुम्हारे फैमिली में हो, कुछ भी हो,
जो रॉन्ग आवर्स पे तो पहले नहीं करते, और कोई डॉक्टर हो, काउंसलर हो, कोई भी हो, लाइक शताब से आप लोग कितने लोग शताब को लिखते हैं, ऐसे शताब को डायरेक्टली कॉल मत किया करो, वो तो लेंगे नहीं, वो अलग बात है, बट नहीं करते ऐसा। लोगों को पूछते हैं इज इट ओके इफ आई कॉल यू, what would be the appropriate time, because I don't teach you all only emotional wellness, I teach you all soft skills. These simple skills will take you a long way in your work, in your career. It's going to help you grow and become a much better person. And people appreciate people who are well put together, are well mannered, are polite. तो फिर उसने मुझे ऐसे लिखा, बोला इनको समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर अपने आप को इवैल्यूएट किया, देन आई थॉट नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जनरली जो जब मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ ना, बेटा इट्स नॉट द राइट टाइम, यू शुड नॉट बी कॉलिंग मी एट नाइट, एंड दे वेरी नाइस, दे से लाइक सॉरी मैम हमको रियलाइज नहीं हुआ, वी जस्ट वांटेड यू टू रीड आवर चैट फास्टर। तो आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। आज भी इफ यू पीपल सॉ, I don't know if you saw the thing, someone was like really trying hard to get my attention, right? And I had so many DMs of 3 weeks. I feel very bad if I am not replying to the ones who waited longer, but this person would not relent. What I liked, he was very polite. He's like, please ma'am, 5 minutes. And yes, okay, okay, it was not really 5 minutes for me because I was going live. I was going to have these kind of, I had clients today. After 3 weeks, I'm taking online calls and stuff like that. So I was already tired. And how to come? Yes, Ashutosh, I'll answer you. So this is what happened. And all of you all, please, ma'am, अगर से free में भी आपको मदद करते हैं, I think I deserve respect. I have earned it. I don't think I have not earned the respect and the value. तुम लोग का time जैसे precious होता है, हमारा भी time precious होता है. और कल किसी ने मुझे एक रिक्वेस्ट किसी चीज और के लिए भेजी थी, मैंने उनको आई थिंक 2 वीक के बाद या मेरे हॉलिडे के बाद मैंने उनको रिप्लाई किया, तो I said I'm sorry, I cannot accept this request or something it was. And so then the person said, you know what ma'am, what I liked is that you still replied even though you were busy, even though you took time to reply. I said that's what a person should be doing. All of you all, you can learn this also. किसी को सीन पे मत छोड़ो, unless, मैंने बहुत बार कहा है, unless वो person is not worthy of your replies, is a terrible person and is not a good per se. I don't see them as bad, but you know कि आपको बहुत कोई तंग कर रहा है, बहुत रुला रहा है, आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहा है, वो अलग बात है, बट जनरली जितना हो सके लोगों को रिप्लाई करो, इवन इफ इट इज नेगेटिव. आई नो समटाइम्स लाइक मुझे भी नो लिखने में काफी साल लगे to get to this point where I can directly say I'm so sorry, I cannot accept this request. Sometimes we can give a reason, sometimes it's not easy for me to give the reason. I had a reason, but I just felt कि शायद उसको बुरा लग जाएगा, तो मैंने बोला नहीं, I'll refrain from giving a reason. मैं सिर्फ उसको सॉरी बोल दिया और उसको अच्छा लगा कि मैंने रिप्लाई किया. तो all of you all, please learn this art also of being prompt. If possible, I know आप लोग काम करते हो, पर especially अपने friends को, अपने loved ones को, जिनको priority list में रखते हो, make sure कि आप उनके लिए time निकालो, आप उनको you know, even if it is to say I'm sorry, I'm busy, I'll get back to you. It's very important. These are very simple skills, but if you nail this now, you'll be well liked about in your circle of friends, in your like मेरे friends वही बोलते हैं, कोई किसी का रिप्लाई आए ना आए, मेरा रिप्लाई जरूर आएगा. Considering I work, I have a family, I'll still try to take time out to reply to people. ठीक है? So Balaji, that was the rant of the day. I know it was not as much as spicy. Oh, Balaji, thank you, Balaji. I was not really expecting anything, but I know it was, hi Zu, how are you? Good to see you. Hi Hriday. I will reply to each and every question. Yeah, ma'am, ayo Sindhi acheti. No, take no Sindhi. I don't speak Sindhi. I can understand what you wrote. Hi Gulab Abbas, kaise ho? Good to see you here. So I don't speak Sindhi, but I do understand. I'm good, thank you. I was away for 3 weeks I went to India, Singapore. No, almost a month. Sorry, India, Singapore, Bali, and Jakarta. Despite getting so less stimulating results. Gyama, तुम्हारा क्वेश्चन था क्या पहले? अच्छा, जो जूम पे है, 1 मिनट, आई थिंक सबसे पहले इनका क्वेश्चन आया था. हम अभी क्वेश्चंस लेंगे क्योंकि हो गया मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करके. फेल्ड इन एग्जाम टुडे, फीलिंग वेरी डाउन एंड अशेम्ड. आई नो व्हाट यू आर फीलिंग, बिकॉज ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि फेल नहीं होते हैं. कुछ लोग पास हो जाते हैं हर सब्जेक्ट में बिना पढ़ाई किए.
that is like really interesting how they manage that. But I just want to tell you something, Beta. I know that it feels horrible, especially the pressure we take. And I don't know what, but you've not explained to me which subject you failed, or did you fail the entire year? Let me read it again. What did you say? And what are you planning to do about it? Because that's very important. थोड़े देर के लिए बुरा feel तो होगा. You're feeling you failed in one exam or the entire bunch of subjects. I'm not sure. But जो भी exam आपने दिया है, आपको क्या लगता है आपने थोड़ी देर के लिए बुरा फील करो, थोड़ी देर के लिए ashamed फील करो, और जब हम guilty और ashamed फील करते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं. We realize कि okay, this is not something that we want to put up with, as in we don't want to feel this shitty ever again. So we work harder for the next time. So it's not really a bad thing, but let's say you are trying to do something that you're not fit for. Maybe आपने जो भी आप शायद competitive exam की बात कर रहे हो, पता नहीं आप किस चीज की बात कर रहे हो. So किस चीज की आप बात कर रहे हो मुझे नहीं पता. तो whatever it is, please try again. Don't feel कि just because मैं ये fail हो गया तो तुम्हारी इज्जत इससे attach नहीं है. तुमने कोई crime commit नहीं किया है, तुम एक अच्छे इंसान हो, और तुम में conscience तो अभी भी है. You are feeling like no, I should do better, and you must try to do better. Why is that? Because this exam and these subjects that you have taken is going to help you to have a career later, right? It's not about the society. Society though will not be happy. Even like I've seen people who get 95, they're like, we need to retry again because we've not like got enough marks. And like, what? So हम इधर 60% वाले student थे. So better try again. Don't give up. And if you need study techniques, something else is bothering you, why did you fail? That is the most important thing. Were you not prepared enough? Is the subject not up to your thing? You need some help with the subject. Are you taking tuitions? Do you need help from our Discord server? Do you need some people you want to sit and study with? Do you need study techniques? Are you going through a relationship breakup? Many people who are not studying hard enough or not being able to study, वही time पे उनको कोई ना कोई breakup या कुछ ऐसा हो जाता है, तो तुम लोगों का studies ठीक से नहीं होता. तो बेटा, you've not given me anything to go on. So how about we talk after the YouTube and all the sessions so that I can one-on-one talk to you. What is bothering you? Is it your family which is bothering you? It's a relationship. Is it something in school? And what is your next step? Because living in the past is not going to help you pass, right? What is done. उससे सीखो और आगे बढ़ो. और let's say, और बेटा अपने आप को hurt नहीं करना, ठीक है? Do whatever you want. Feel bad, feel sorry, pity yourself, but गिर के खड़े हो जाओ. फिर से try करना. Don't harm yourself. No exam in this world is worth giving up your life. I know many children get extremely suicidal when they don't pass exams. It is okay. It is just an elimination process. What are you good at? What are you not good at? What you should be doing. After some time, when you become like 30, 40, you realize, oh, damn, I was like putting so much pressure on myself. You are going to find your own, you will get it sorted finally. And उतना ही पैसा चाहिए हमको जीने के लिए. पैसे के लिए अपनी जिंदगी खोना और किसी मार्क्स के लिए अपनी जिंदगी खोना, ऐसा मत करो. बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे मेरे फैमिली में around us who are desperate for पैसा कमाना गलत नहीं है. पैसा कमाना उतना है और बिल्कुल on है. Mute करो please. I'm talking. इज्जत कमाना है. Please mute yourself. I think you have something on the background. Anyway, so beta, do contact me and I'll give you some resources for your overthinking, for your suicidal tendencies, in case you have it. I'm not saying you have it. I just pray that you are strong enough to go through this. This is just one paragraph of your life in the entire book, in this entire life का journey जो novel हमारी जिंदगी से होती है. It's so beautiful. It's so lovely. Okay. हार नहीं मानते. और I promise you, in like 5-10 years, this damn exam will not mean anything to you. कोई नहीं पूछता हमारे marks and हमने कितने grade लेकर आए थे. कोई नहीं पूछता later on. Like, yes, initially that you get like one foot into the door when you have your college admissions or a job.
but उसके बाद आपका personality, आपका hard work, आपको it will take you places. And it's okay if you're not cut out for a certain subject. It tells you about you. I have no shame in admitting that, okay, I'm not cut out to be a doctor. I'm not cut out to be an engineer. Sometimes I wonder even if I'm cut out for something or not, accept this. And it's completely okay. Feel free to be yourself. Love yourself. This is how we are born, right? We put as much effort we can. We can't do everything. It's not possible. It's impossible for every human being to do everything correctly and everything to the point and become an engineer also, doctor also, contractor, artist, singer. So it's okay. It's telling you what you can and cannot be. Okay. God bless you and be strong. I'm there for you if you need. You don't have to go through it alone. And our Discord server is also there. I promise you, if you tag the admin, lots of people will rally around you because हमारे Discord पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो फेल होके आते हैं और फिर finally उन्होंने life में अपने सारे exams पर. I have even Aryan here who has gone through a total dip to being published in Amazon. I'm like, then I have another bacha who contacted me, Isham, who contacted me this morning, and he's like, he calls me mom. So he's like, Mom, I need to inform you about this. So it's just a phase. It's just a phase. Just hang in there. You will come out of it. Just be a little stronger. Okay. And I help you to become stronger. Ooh, Mega in the house. Okay. 1 minute, yeah. Let me. And so is Aryan in the house. Aryan, Mega, lovely to see you all. But हम लोग बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि इतने सारे questions आ गए कि as usual I am lost. Okay. Yes, Aryan calls me mom too. So this is not my Aryan. This is my. I can't even call him team वाला Aryan. Team में कुछ नहीं किया सारे में. तो कल उसको उसकी he's going to recite poetry and people are going to pay to hear his poetry. So I told him, Aryan, then तो मेरी poetry due रही क्योंकि वो मुझे he was telling me that how important I'm in his life and what a change I brought in his life. So I was just saying मेरा poetry कहता he says perfection के लिए कोई poetry नहीं होती है. मेरे अभी मैं तुझे उसका जवाब दे रही हूँ. Excuse me, this is just an excuse. Perfection पे भी poetry नहीं की जाती. पहले तो perfection नाम की चीज नहीं होती. मैम perfect नहीं है, mom perfect नहीं है. तो imperfection पे भी बोला जाए. Hi Mega, I missed you too, beta. How are you? Please speak, guys. Aryan, Mega, speak. Till then, I'll just go through. I'm good, ma'am. How are you, ma'am? Long I am time. good. Yeah. I was just watching your session. You were talking about like someone who failed in the exam and kind of stuff. Even I couldn't make it this time, ma'am. My exam result came out today. Same exam, UPSC exam, but I couldn't make it. Which one? UPSC. Yes, ma'am. So, Mega, what have you learned from it? Come on, let's see. What can you guide this child who has failed in his exam and what makes you keep trying? Ma'am, actually, there are so many things, especially the first thing is that dream, which I always like it had in my mind since beginning that when I'll grow up, I'll try for this examination and I'll just do something really good and great for my country. I had some vision in my mind, and because of which I wanted to try for this examination. And what I learned in these years is that when you have something very close in your heart and for which you want to work really passionately, it teaches you so many things at different stages of life. You learn that how to just embrace failure. Like I was not at all strong like earlier, ma'am. I was having fear of failure like so intensely. I just didn't want to try out new things because I was fearing failure. But after trying for this examination, I learned how to embrace failure with some grace. And not just that, ma'am, there are so many things like I learned so much about my country, so many things which I was not knowing before. I got to learn about this as well. So yeah, ma'am, journey definitely is important, but at the end of the day, it definitely hurts, ma'am. And it will hurt, right? क्योंकि इतना जैसे तुमने अभी यूपीएससी बोला, उसमें जस्ट रेड द चैट, उसने भी यूपीएससी में प्रॉब्लम हुई है उसकी. So it's a very common thing. तुम लोग, you see, it's there. It's not like हमारी पढ़ाई. And especially, ma'am, it hurts when you're too close. Like I was too close, ma'am, this time. Like in my initial 2 attempts, I was not well prepared. Like I thought that I'll prepare well like next time. And this time I really put in the effort and I tried my best and I was too close.
Like in paper two, I cleared paper two and I was so happy that I have cleared paper two, which was my biggest fear since the beginning. And Okay. in paper one, actually, this time paper one was quite unprecedented. Like suddenly everything just got changed. They changed the pattern, which was not being changed since many years. So suddenly they introduced this change. And because of which paper just became too unprecedented for so many aspirants. And I think I missed it by 5 or 6 marks now Oh, this wow. time. So say focus, Mandeep, Megha is going through exactly the same thing you people are going through. She just failed her UPSC again by just few marks, and she's not giving up. So Megha, what is your, how many times do you want to try? I mean, what if? I'm going to be the devil's advocate because I want you to think about this. Do you think it's the preparation which was an issue? So you think for the next time you can make it? Ma'am, I think I'll try it for one more time because I have already invested a lot into it. And I just do not want to give up at this moment when I think that I'm too close in this This is called examination. sunk cost So fallacy. लोग yeah, सोचते I हैं know this इन्वेस्ट one. किया है और इन्वेस्ट करते जाते हैं बट ऑल ऑफ यू ऑल बी केयरफुल ऐसा ना हो बस करते जाओ और उसका रिजल्ट ना मिले फाइनली अपने आप के माइंड में एक ये बना दो कि I'll explain in my way right let's not say क्योंकि अभी मैं एग्जाम्स के एज में ग्रुप में नहीं आती so let's say No, हमारा I'll give you an example of हाँ failure. बोलो चलो There is no better example of failure than my recent past. So, I'm currently beginning or rather restarting my engineering. So, I have had really bad mental health due to certain reasons in the past 2-3 years. Due to that, I messed up in my 11th, 12th. I messed up in my first year as well. So in my 12th grade, I had an accident on the second day of my boards starting. Still, I gave the exams. But even after giving the exams in like a total painful situation, I could not even sit on the chair. I was in a really bad shape. I failed my mathematics exam and I had to give a retest. I was low, but done. I gave the retest. I coped with that. This is like the 12th main boards. Okay. Then after that, somehow I got into an engineering college. I got myself a good college. It was a good degree. I started going to the college. I made myself a nice reputation over there. I completed my first semester and my health became really bad during these times. So I even had a heart attack. And what happened was that heart attack was just before my semester exams. Now, because I was in the hospital, I was not able to complete my assignments. I was not able to give my exams. I wasn't able to fill the exam forms. That in engineering or in college terms means immediate detention. The only choice I had was to leave college, or rather, I was getting kicked out of college, and that's what happened. And yet, I was like, okay, you know what? This year was bad. Even mentally, ma'am, you know my past. You know what was the mental trouble. I'll just tell you what it was. I destroyed all this behind a girl. It was one-sided love, 4 years, PTSD was there. I had panic attacks. I had a lot of shit going on just due to that one person. I somehow dealt with that. I was like, okay, this happened. It's all right. I took the time to heal myself. I took the time to work on myself. Like, this is over for now, but it's okay. It's not over in life. There's still a lot of life left. So I started working on myself. I started focusing on myself. But now during this time, because I was focusing on myself, I wasn't able to focus on other things. So I started this web development company in 10th standard. I had to close that down because I just did not focus on it. I am the president of a Rotaract club in Pune. And that club almost closed down recently because there were a lot of factors, but I think I was a really bad president for the recent past. So even that, so it just kept getting lower and lower and lower. Personal life, professional life, academic life, everything just kept going on, kept going down and down and down. And the only thing I told myself was, and believe me, I wanted to kill myself. I always thought of that easy exit. But one thing that kept me going was, no, I have dreams. And well, a little bit of an ego that this world needs me. You are this, like, call it an ego, call it an arrogance, but this thing,
that you are here to do something in this world, and you cannot leave before you do that. That is something that you should have in mind. You have a responsibility, you have your dreams, you have your hopes, no matter how low you are, no matter in the lowest point you are. Like right now, I had to take admission in this college, which is like, yeah, it was really mediocre, and I was really sad about it. Even today my CET results came in, and so what I had done was I gave my physics section properly, I gave my chemistry section properly, and for maths I was like, let's just leave it blank. I got the marks that I needed. What happened was, just because I left that maths blank, my whole thing collapsed. Whatever good work I had done in the other two exams, it was for nothing, just due to one foolish thing. But again, I was like, this is fine. And I am now into college. I'm working hard. As ma'am said before, I just got to know yesterday that my personal book is now available on Amazon, Flipkart, and this other website. And I'm doing this poetry show in like a week. It'll be like a big paid show. I have at least 200 people coming to hear me, perform my poetry. And that is big stuff. And I am getting a lot of success in my life. So even though you have your lows, just keep working. There's always going to be something that that will like give you the light. There's always a light in the end of the dark tunnel. And it's not that the light is there somewhere, far away. The light is inside you. You just need to ignite it. So if I can summarize what he was trying to say, आप देख रहे हो उसका एक एलिमेंट ऑफ लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, पर दूसरा एलिमेंट ऑफ लाइफ ठीक चल रहा है. तो हम सबके लाइफ में बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. हम लोग इतना फोकस्ड रहते हैं ना वो एक चीज पे जो हम ठीक से नहीं कर पा रहे, विच आई अंडरस्टैंड कि आपके करियर्स में इम्पोर्टेंट है, बट अपने मेंटल हेल्थ के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये याद रखना है. अगर से आप लोग ठीक से नहीं सो रहे हो, आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आप हॉबीज नहीं रख रहे हो, आपके इंटरेस्ट कहीं और नहीं है, आप your head is going to explode with the pressure and there is no way to vent out and let out the steam inside you, right? You need to do other things also. Of course, like somebody said, India mein they should ban porn, but cigarettes bhi ban nahi ho rahe, alcohol bhi ban nahi ho rahe, log weed bhi bech rahe hain, kya kya ban कराओगे? इंसान ही निकाल रहा है ये सब, right? अब वो अगर से बैन भी होता है, आप मुझे बताइए कितने लोग कुछ चीज इंडिया में बैन हो जाती है तो आप लोग ये नहीं कोशिश करते कहीं और से डाउनलोड करना, देखना, वेखना. तो ये दिस इज सी टू होल्ड समवन एल्स रिस्पॉन्सिबल. Somebody told me to take their name, S. Jyoti. Okay, S. Jyoti, is this you? I think, yeah, who's also on Zoom. So told generally जब मैं stream देखती थी और so excuse me, as you people know, I'll go like this, right? Yeah, stay connected to my conversation. Okay, so I used to look at Shweta's stream and some of the streams and especially the Bollywood actors and all. Oh, please एक heart दे देना, please मेरा नाम ले देना. मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है तो आज किसी ने बोला मैम मेरा नाम लो. I'm like, अच्छा, this has happened before few times, not many times. So I always found it very this thing कि ऐसा क्यों बोलते हैं. Can anybody explain to me, by taking your name, how does it make you all feel? Like it makes you feel important, that's why you do it, or like, or because you like me, like this person likes me, my favorite smart. So of course, if you like the person, then only you're going to say, ma'am, please naam le lena. But see, mere hisab se, सिर्फ नाम लेना is not the thing. Okay, अपने नाम के साथ आपके जो actions हैं, आपके जो कर्म हैं, it should speak volumes. कि जब रचना दरियानी का नाम आता है, सिर्फ रचना दरियानी नाम क्या है, right? पर रचना दरियानी करती क्या है? तो ये जिसने अभी मुझे बोला है ना उनका नाम लेने के लिए, I would want you to actually make a name for yourself in the way that you add value to our country or even to the world, wherever you are, even in the smallest or whatever way you can help someone do that, then मैं आपका नाम लूंगी. I give you something to work for, because I really feel each one of us should add value, not just to our lives. अभी सब तुम देखो, सबका अपना अपना फोकस चल रहा है, right? किसी का एग्जाम चल रहा है, किसी की पोएट्री पब्लिश हो रही है, किसी की गर्लफ्रेंड के इशू चल रही है, किसी का एग्जाम इशू चल रहा है, पर आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं?
आप लोग सबको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था मेरे भी लाइफ में कुछ चल रहा है, मैं जो बात नहीं कर सकती, बट आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू. आई वांट यू टू डू समथिंग in this lifespan. Not every single day, it's not possible, but thoda do try to be kind, try to be nice and be there for others, and थोड़ा सा अपना जो तुम्हारे पास है ना ब्लेसिंग किसी और को दे. ठीक है, उससे देखना तुम्हें नाम कोई तुम्हारा ले ना ले, तुमको अंदर ही वो अच्छी वाली फीलिंग आएगी. ठीक है, ओके नेक्स्ट. बेटा बोलो मेघा. One thing I just want to say, when when I stepped into this preparation of UPSC, like before, people used to say कि जब आप इसका preparation करते हो ना, तो ultimately you become a better human. आप Okay. एक अच्छे इंसान बनते हो. But In मैम पता है, UPSC. हाँ hello, yes ma'am. Okay. So ma'am, but since the time I have started watching you, like your sessions and everything, and I can feel a sort of transformation in myself. Like the kind of book I read, history, geography, all the things like polity and things, I get to know about my country and how system works, kind of stuff. But when I watch you, when I listen to you, ma'am, I feel internally getting transformed. I just learn how to become a better individual, not just for myself, but for other human also, which nobody taught me, ma'am. Till now, even in school and anywhere I went to, any book I read, nobody taught me like with this precision that you have to become this, you have to act like that. Like nobody teaches us. And so I'm so grateful to you, ma'am. Yes, Thank you. I'm so grateful that you exist, ma'am. Thank you. Thank you Thank so you. much for Kind. that. Thank you. Thank you. It's so nice to be back to you all. मैं kind of भूल भी गई थी YouTube live कैसे जाते हैं तो 1 महीने में. But live. Hi, Vitamin DJ. Okay, Priyam writes, you might not know me, but you've been the support and gave proper clarity on my problem. Kudos, ma'am. I know you're doing well. Thank you. Thank you, Priyam. Hi, Vitamin DJ. How are you? थोड़ा हम इंस्टा को भी देख लें, नहीं तो बोलेंगे मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ. Hi, धवल कैसे हो? Good to see you. Hi, Nitish. Maheshwari Mukul, Dheer. Dhruv Sharma wrote, that's really sad to hear, ma'am. People should be truly grateful that you're always there for helping everyone. And instead, the behavior this guy has shown, yeah, sometimes it hurts my, gratitude रखो please. Yeah, gratitude तो रखते हैं, but कोई लोग भूल जाते हैं ना. मैं that's a rant इसलिए करती हूँ ताकि उससे हम सब सीखे, right? It's okay. I don't hold any grudges. वो इंसान फिर से मेरे पास आएगा, मुझे sorry भी नहीं बोलेगा, ma'am, I need you. Next second I will help that person. This is another thing I want you all to learn. Don't carry hate, don't carry grudges and anger, and see, सबके साथ रखोगे ना बहुत प्रॉब्लम होगा. एक आध इंसान, हम सबको इरिटेशन तो होती है, इतना सेंटली है तो मैं भी नहीं बन सकती, राइट? कि आई एम सो गुड, आई एम सो परफेक्ट एंड आई डोंट फील एनी ill will, or let's say somebody can't hurt me. Of course people will hurt you, you will feel bad, and sometimes you were like really upset with that person. That's okay, but most of the time ये जो peripheral वाले लोग होते हैं ना, जो आते जाते आपके लाइफ में, इतना इम्पोर्टेंस उनको नहीं देते कि वो तुम्हारा को लो फील कराए, तुम्हारे अंदर तुम्हारा कोर चेंज करे. तो बी केयरफुल ऑफ दैट. ओके, नेक्स्ट. Wow, so many people have joined. Big guy, hi, long time no see. Saurav, how are you? Sumit, nice to see you, bacha. I know you have DM me. Just give me some time. I'll reply to you. Dr. Navpreet. Hi, Dr. Navpreet. S. Jyoti, you joined here also. Oh, you joined here, YouTube and Zoom. Wow, I'm popular. वीडियो बनाने के लिए माइक की जरूरत पड़ती है क्या? Not really. जब मैंने स्टार्ट किया था, although I'm the most laziest content creator on this planet. Okay, so this content creator is actually, I'm not even worthy of giving you advice on content creation. तो मैंने खरीदा था. ओके, श्वेता आपके बोलने पे मैंने माइक जरूर खरीदा. भगवान ही जाने वो माइक कहाँ है, क्योंकि जूम का माइक इतना अच्छा है कि जरूरत नहीं पड़ती. 1 सेकंड, अगर से आपको बस एयरपॉड्स या आपके वो हेडसेट टाइप वाले हैं, आप उससे भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. उस जरूरत नहीं है अपने को उसका. ठीक है, this is the best stuff. I record YouTube videos with this mic. But I don't like this big thing. I see Shwetab also. मेरे को ना जब सुनाई नहीं देता ना मेरा आवाज, और मुझे लगता है मैं बहुत जोर से चिल्ला के बात कर. Literally, when I wear both my AirPods,
I feel I'm yelling literally. So I only put one in my ear when I'm talking also, so that I can hear myself talk. So I know this is not for me. This whole thing, the voice echo होता है. हाँ पता नहीं echo होता है कि जो भी होता है, मुझे तो मजा नहीं आता. और वो even in the flight अभी जब वो देते हैं ना हेडसेट, सारा टाइम मेरे कान दुखते हैं उसको लगा के, तो मैं आगे पीछे करते रहते. तो सुनो, आई लाइक माई एयरपॉड्स और आई डायरेक्टली रिकॉर्ड ऑन द फोन. लाइक हाँ, फोन पे इतना अच्छा वो पिकअप करता है. ओनली समटाइम्स जब वो इर्द गिर्द शांति नहीं होती ना, तो एक बार आई रिमेम्बर मेरे बेटे ने जोर से चिल्लाया था. उन लोग मस्ती कर रहे थे, तो किसी ने बोला, वो कैसे आजकल लोग ना याद भी रखते हैं कौन सा टाइम पे था वो, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग पे वो. लाइक even that you have to be careful. So otherwise you're fine. OMG Naman. Okay, ma'am, I feel you're doing God's work. Thank you, Naman. I think so too. I think so too. I think I'm doing something unique. I won't say I'm doing saint wala kaam, because I think I can do better. But this is my limitation. Like, you know, उतना ही एक इंसान कर सकता है. मेरे पास, मैं तो कभी कभी विश करती हूँ, जैसे मैं अभी देख रही थी, फ्लैश देख रही थी, तो मैं सोच रही थी मेरे पास भी फिर मैं ट्रांसफॉर्मर्स देख के आई, तो मैं मेरे बेटे को बोल रही थी मुझे भी ऐसा कुछ सुपर पावर होता, शायद मैं ज्यादा अचीव कर पाती. बट ये मेरा जो फिलहाल ये जो लिमिटेड पावर है, इसके साथ मैं इतना ही कर पा रही हूँ. But you are inspiring us. Thank In- you, thank I you. got inspired by you, and I'm actually getting a psychology degree. I will be starting later this year. तो पता नहीं भगवान ही जाने तू क्या क्या नहीं कर रहा है. मैं तो परेशान हो गई इस बच्चे के साथ. ही इज एवरीवेयर. लाइक एक मेगा है जो यूपीएससी को ऐसे ऐसे, ये पोइट्री भी करेगा, इसको ये डिग्री भी चाहिए, उसको रोटरी क्लब में प्रेसिडेंट भी बनना है, उसको पोइट्री भी लिखनी है. भगवान ही जाने क्या क्या नहीं करता है. एक Okay, हाय संजना, एक मिनट बेटा, तुमने हाई लाइक दिस होल लिस्ट. आफ्टर सो लॉन्ग ट्रांसडेंटल, नाइस टू सी यू. हाय नेहा, कैसे हो बेटा? तनवीर हाय, आपको बहुत अच्छी देखने लग रही हो. आपको बहुत अच्छी देखने लग रही हूँ. You are looking. कि मैं अच्छी दिखने लग रही हूँ. तो पहले मैं खराब लग रही थी. आई डोंट नो, सो सॉरी. मेरा जोक है, ऐसे ऐसे सीरियसली नहीं लेते, मैं जब मजाक करते रहती हूँ. ठीक है. हाय सम्यक, हाय मयूर, हाथ दुख गए. हाय रोहित हुडा, अरे वाह, या क्या कर रहे हो? पोटैटो कार्ट, तुम्हारा भी नाम, प्लीज टेकिंग माय नेम. एस ज्योति, आई डिड टुक योर नेम कपल ऑफ टाइम्स. नीलेश अलावा, कैसे हो? आई नो यू हैव टेक्स्टेड, गिव मी टाइम. Safal, I know you have also texted. The mystery artist. Oh, mystery artist. Golani Dipti. Acha, hi. Hi to everybody. Okay, hi Rising Sun. Hi Amir. Hi Amir Malik. ऐसे Amir Malik ऐसे ये क्या Amir ऐसे क्या कर रहे हो? Like, hi Vishnu. Hi विष्णु, तुम वो विष्णु तो नहीं है. अच्छा, राइजिंग सन, नमस्ते नमस्ते. हाय विक्रांत, हाय रोहित. उधर मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं सबको हाय बोलते बोलते थक जाऊंगी. हाय मैम, ब्रेक का बोल रखा है, फिर भी बात होती है. शुड आई आस्क हर टू बी नॉर्मल? बीन 12 days, every time I drive I feel I may be in an accident. She will pay attention and come back. How sad is that, na? That only an accident will bring somebody back. That's not a nice way, by the way. Okay. So you need to be a little are you on Instagram? Yes, I'm who is this Sand, by the way? Sand kiska pet name? Yeah, I'm on Insta and I'm on YouTube and I'm on Zoom. I do all three whenever I've decided to be like a superwoman and try to do all the social media together. So yeah. देखो, NYV जो तुमने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, चलो आपका एक्सीडेंट हो गया. ओके, लेट्स से आपका एक्सीडेंट हो गया. लेट्स सी, लाइक आई एक्सप्लेन्ड टू यू, दिस ओवर थिंकिंग, दिस अंडर थिंकिंग. लेट्स डू द अंडर थिंकिंग. मींस हमने पूरा दूर तक नहीं गया, उसको पूरा सोचा नहीं है हाउ टू प्रोसेस इट. नाउ लेट्स से यू एक्चुअली मीट विद एन एक्सीडेंट, ओके, एंड शी ऑल ऑफ अ सडन फील्स, ओह हाय, मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ, मैं आके तुम्हें हॉस्पिटल में देखने लग जाती हूँ. ठीक है, लेट्स से you pass away, God forbid, just being the devil's advocate. She's going to forget you one time or the other. Let's say you are okay, heal हो जाते हो, तुमको 2-3 fractures आ जाते हैं, तुम ठीक ठाक हो जाते हो. वो सिर्फ टेम्पररी आप ठीक हो जाओगे. ठीक है, आपका रिलेशनशिप, क्योंकि वो कहीं से अंदर से टूटा हुआ है, उसकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं, और वो फिक्स शायद नहीं करना चाहते आप उसको
पिटी से उसको अपनी तरह ड्रॉ कर रहे हो, राइट? यू आर सेइंग come back to me, feel sorry for me, feel sympathy for me, maybe if I make you feel sad enough and bad enough and guilty enough, you're going to love me. No, for that will be temporary, because finally, don't you need to have communication, don't you need to have a rapport, don't you need to get that attraction going and continue that, right? And आपको समझना है, like many of you all who have come to me, including Aryan, he's taken a long time to get over people, but he has finally done it. Why and how did that happen? Because he realized that shit, man, I've wasted my life on a person who doesn't care enough for me. I care more, and the person gives a fuck all. Do you really want to be cared by a person like this, who has to be zabardasti told to care for you? Shouldn't it be organic? Shouldn't be like mutual? It is not mutual here. आप बार बार ऐसे hope करोगे, ये करोगे, तो there are more people in this world. I have told you all many times. I think Shweta has, and everybody's told you all. पर तुम लोग सीखते नहीं हो, right? It's okay. That's also part of learning. Even Aryan learned. Even Gaurav, I remember he had a crush on someone. So I understand where you're all coming from. And I don't know your entire case details. I cannot during live session go and do the proper groundwork. So please think about it. What are you saying? And you know what hurt me most here? If you would be my son and you would say this shit that I wish I was in an accident and maybe she will look at me again, I would tell my son, what about your mother? What about your father who love you so much? You would rather risk your life for somebody like this. What about us who raised you with so much love and affection? And जिनमें आप लोगों में तो most parents, I'm not saying all parents, most parents में हमारी जान आप लोगों में बसती है. क्या बोल रहे हो बेटा? सोचो जरा क्या बोल रहे हो? So I hope you understand from this simple words that I'm giving you. समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको टाइम लगेगा, कोई बात नहीं. Finally आप सीख जाओगे. Hi Akshat, hi Neha, I'm good beta, how are you? Hi Julius, hi Tushant, hi Dede, Risky, is to work for me. Hi Tommy, कैसे हो? Long time बच्चा. कुणाल, इसलिए मुझे ना ये इंस्टा से थोड़ा इरिटेशन होता है, मेरे हाथ दुखते हैं इसको करते करते. अंशुमन भाटिया, कॉस्मोस, आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? शट अप प्रशांत, ओके शट अप प्रशांत, डोंट से एनीथिंग. ऐसे ऐसे नाम रखोगे तो मैं क्या बोलूं तुमको. मोहित भाटिया, कैसे हो? लॉन्ग टाइम. जिबिन, हाय रजत, कैसे हो? प्रतीक, कयूरी, हाय कयूरी, लॉन्ग टाइम. आई होप बॉम्बे इज ट्रीटिंग यू वेल. Rajat writes, the queen is back. Yes, the queen is back. And Jagrit, good to see you. आज तुम आए नहीं, क्या बात है? Questions नहीं है मेरे लिए. Ankit and Ashu Patel. Okay, next question. Hello, ma'am. I don't know how to initiate conversation. It is very difficult for me to talk to people. How can I improve myself? Krish Gupta. Krish, तुम्हारे पास एक आज फ्रेंड तो होंगे ना बचपन से, आप लोग बात तो करते आए होंगे. मुझे लगता है ये जनरेशन को इनसिक्योरिटीज इसलिए हो रही है क्योंकि तुम लोग सारा टाइम ये इंस्टाग्राम वाले लोग जो धड़ बोलते रहते हैं, राइट? तुमको लगता है सब ऐसे ही बात करते हैं. नहीं, कुछ लोग, we are just, some of us are just cut out. We are vocal and perhaps we have the gift of the gab. There's nothing wrong with you, Krish. First and foremost, till you do not become comfortable with that thought process, that I'm fine, nothing is wrong with me, and nothing is so great about the opposite person that I cannot have a conversation. They're as human as you are. I would recommend you to first work on your self-worth, because obviously it is low. Contact me, I'll help you with that. Second, contact Aman Shukla. He is a public speaking coach. I always recommend him. You have to learn that. He's pretty reasonable. I love his content. Even otherwise, आजकल मैं busy हूँ, इतना like और follow नहीं किया लोगों को, but please go and do that. You'll be like really good at it. And above all, हमको लगता है, let's say I'm considered an ambivert, right? हमको लगता है कि अरे she's talking on YouTube and Insta, she's like so cool, she can speak on any topic. No, it's not true. You see, a lot of people put on an act.
A lot of people come to this point also because we have practiced it. Without practice, it doesn't happen. I have a Discord server. Please go and practice with other people who are, there's a specific channel over there, people with who are introverts and shy, and be comfortable with yourself. If you are very shy and आपसे हो ही नहीं रहा आपने ये सब करने के बाद, then be okay with it. I mean, if you are not being able to initiate conversation, then remember you need somebody has to listen, right? If everybody keeps talking, who's going to listen? So sometimes you can be a good listener also. Lots of elements which go into communication, but first fix that, find that reason why are you so uncomfortable with it. If it is some innate personality trait which is part of you, then maybe you cannot completely change yourself, like saying मैं मुझे जितना बात करने की आदत है, तुम्हें किसी एंगल से लगता है मैं चुप बैठने लग जाऊंगी, मैं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, बट मेरे को वो क्या है, वो विपासना है, राइट, जो 10 दिन तक शांत बैठना पड़ता है. आई थिंक मैं उधर भी पागल हो जाऊंगी, मेरे से बैठा नहीं जाएगा. मैं या तो उधर 10 दिन में बिताने के बाद भी आई थिंक फॉर फ्यू डेज आई विल बी क्वाइट, बट देन आई विल बी it comes back to its original shape. We have that original innate quality. We cannot completely change that. So be okay with who you are. You're so wonderful. There are so many good qualities about us. And just because someone speaks better than you, it doesn't make them better than you. Because each one is better in a different way. We are so unique. Never forget that, okay? And connect with me. I'll help you further. Ashu Patel, hi. Hello, ma'am. How are you? Who is Savi? Savi, I'm fine. Arun is writing over there also. You're looking so pretty. Thank you. Alishba, kidhar ho beta? How are you? Thank you, Alishba, for your birthday wishes. Thank you, everyone, for who wished me. Jitendriya. God can reach everywhere, so He sent you to solve. Sorry, God can't reach everywhere, so He sent you to solve some of our problems. That's a beautiful compliment. I humbly accept it, but I don't know if I can ever, meet up such high expectation. I'll try my best. Anirudh, Shobhit, Ayush, Vikas. I'm trying to say hi to all of you all. Thoughts on psychoanalysis. We do that. I'm a psychotherapist, so yes, it matters. If you know what is psychodynamic theory, it means you're a total sum of your past. So a lot of things we learn, a lot of things are innate. So जब कोई एक तरीका हमारा behavior का होता है, तो lot of things come बचपन से. But having said that, I am also a firm believer of CBT. We can change. I use DBT CBT hypnotherapy. We can change who we are. After some time, we have to learn to analyze ourselves, see how much we can change, and certain things when you cannot change and you think कि मैंने बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हुआ, then you have to say hell with the world. हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है? Some traits of me are like that, I'm like, I'm not going to try harder than this. How to socialize and make genuine friends when moving to a new city. Okay, since I have moved to a new city, first and foremost, the statement itself is flawed. When you say I want to make genuine friends, you're assuming that the rest of the world is fake around you, that only select will be genuine. तो तुम जब ऐसा सोचते हो ना, तुम ऑलरेडी एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाते हो कि ये इंसान अच्छा ही नहीं. पहले तो हर एक एक्सेप्ट टेररिस्ट और ये ब्लैक कैटेगरी को हम लोग निकाल देते हैं. जिंदगी ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती. तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करे, जो तुम जेन्युइन फ्रेंड्स बोल रहे हो, पर वो सिर्फ आपके दोस्त हो सकते हैं. मेरे हिसाब से कंप्लीटली उनको कट ऑफ करने की जरूरत नहीं है. हर इंसान से हम लोग कुछ सीखते हैं. मैंने तो सबसे पहले ये चीज अपने मन में ये पहले से ही डाल दी थी कि आई विल नॉट एक्सपेक्ट जेन्युइन फ्रेंडशिप्स. व्हाट डज ही और शी मीन बाय जेन्युइन फ्रेंडशिप? It's like somebody who will like be there for you. तुम रो रहे हो, वो तुम्हें टिश्यू दे रहे हैं, रात के 3 बजे तुमने उसको कॉल किया, मैं बीमार हूँ, तुम इतना जल्दी इतना एक्सपेक्टेशन लोगों से नहीं रखते. फैमिलीज के लिए नहीं करते. तुम एक स्ट्रेंजर सिटी में आके कैसे इतना जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते? तो मैंने ये डिसाइड किया है दैट आई विल नॉट ट्राई टू I will not try. Please give me some time, and I'm trying to even focus on Insta because I took so many questions there and not there. Don't worry. जिनके पास
पेशेंस नहीं है बैठने के लिए, आप बाद में स्ट्रीम को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं. होपफुली आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चंस. So मेरे हिसाब से don't try to look for people and look for their negative qualities. Having said that, you will meet people who are not going to like you, and sometimes more, sometimes less. Get ready for that. I have had this experience since I moved to Dubai, and I was very shocked. Even at my age, I was shocked at the kind of people I have met. Some are so insecure and so looking for to make you feel bad or treat you bad or whatever. But I grew from it. Initially, it's like, what the fuck did I do? I'm such a nice person. How can this person? Then I realized it's okay. They're not going to like me. Sometimes I'm too much for some people, and it's okay. Sometimes I'm too little for some people, and that's also okay. So, different dostiyan karo, groups join karo, new cities mein. Book club, chess club, dance club, gym. तुमको बैडमिंटन अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है, कैरम खेलना अच्छा लगता है, हॉकी खेलनी अच्छी लगती है, आपको पोइट्री अच्छी लगती है, आप वॉलंटियरिंग कर सकते हो चैरिटी के लिए, कितनी कुछ है, कितनी सारी जगह है. सब जगह आराम धीरे धीरे सब ट्राई करो. और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा अरे कितना तो जेन्युइन फ्रेंडशिप मिल गया, कितना अच्छा दोस्त मिल गया. ऐसा हो सकता है कि वो दोस्ती लास्ट ना करे. तो इतनी एक्सपेक्टेशन लोगों से मत रखो. लोग हमारे लाइफ में आते हैं जाने के लिए, हम भी किसी के लाइफ में आते हैं जाने के लिए. जब तक अच्छा चल रहा है उसको अच्छे से एक्सेप्ट करो. ट्राई टू बी नाइस, ट्राई टू बी काइंड, टू मेक जेन्युइन फ्रेंडशिप्स. द फर्स्ट थिंग इज टू बी जेन्युइन योरसेल्फ, to be a good human being and not to change your core. In case you have negative experiences, which it's a good thing. I know you might think I don't want to like people to treat me bad and bitch about me and gossip about me, but it will help you grow. I know even I didn't like it, but I have become so much stronger कि अभी मेरे साथ फिर से होगा ना, तो I think I'll handle it much better. I'll not get so frazzled. So it's okay. And honestly, you are who you are. It doesn't matter what the world says. Like just It talking about matters. See, whether we say it doesn't matter, it does matter. You see, because we're living in a society, right? What people say about us, how we come across, we do get affected. Especially aap logon ki younger generation do get affected. It takes a hell of a lot of time and struggles and experiences to come in the place like where I am, where I feel ki, I'm cool being myself. To reach that, you will have to go through these highs and lows and friendships and breakups of friendships, and there'll be fallouts, and group के अंदर group बनेंगे, group में से आपको निकाला जाएगा. ये सबके साथ होता है, right? You will take time. कभी-कभी आपके हर एलिमेंट के साथ मैच करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि हम यूनिक होते हैं. तो हम जैसे अगर से लोग भी होंगे, उस हर चीज में मैच नहीं करेंगे. तो इतना सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश मत करो. एक आध अदर मेन सिमिलैरिटीज है. लेट्स से आई लाइक टू डांस. आई फाउंड सम पीपल इन दुबई हु लव टू डांस, and that's like I'm like, thank you God, at least I have that. And they of course turned out to be good friends. I can't say they're like my best friends, or I don't believe that, because I believe best friend concepts are when we were 5-year-old. Even my Jakarta friends, I never call them my best friends, because I feel you're your own best friend. But I have close friends and I have good friends now, and somehow we have clicked. मेरे लिए उतना भी काफी है. अगर से मैं उनको अपना दुखड़ा ना सुनाऊं और मेरे पास कोई मूवी जाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं, I manage by myself. So learn to be independent also. And I'm not saying that it shouldn't affect us. What I'm saying is, वो सामने वाला कुछ भी बोले, you are still the person that you are ना, वो तो change नहीं हो रहा. If someone calls you something, someone calls you a name, that does not turn you into that particular person, right? That's one person's opinion. You are your own person is what I'm saying. Like लोग नाराज हो जाते हैं कि कोई उसने किसी नाम से बुला रहे थे. Like this person is calling me this. Am I that person? Slut shaming होती है बहुत ज़्यादा. So I have seen something recently, or just with my friends, someone was calling a friend of mine names, slut shaming. So like, then she came to me and I was like, no, you're not that person. You know who you are. You were in love. You did whatever you did because it was the right thing to do, because you felt it was the right thing to do. If the other person does not understand, it's because that person does not know the full story, and he does not matter enough to tell him or her the full story. So, just
it's okay. Let them speak. I know it's going to affect you. I obviously, but that does not change that you are a good person and you are a beautiful person. That does not change that fact. Even myself, throughout my life, I've always been called out. I am sort of a different person. I am that guy who roams around with a screwdriver and opens up machines. I'm that guy. So I've always been teased and, said that you're dumb, you're this guy, don't speak. But I've always found my voice. I was like, I know I'm right. And I think these guys don't know what they are talking about. If I'm But sure, sometimes it can be a blind spot. Sometimes, if many people are saying the same thing about you, let's say many people say you're rude, then perhaps you need to work on yourself. Okay. And what is Sand saying? It's not the first time. What are you? I don't know. Maybe you're chatting with him, is it? Yeah. Anyway, he's left the chat, so it's okay. I don't know what you both were chatting. I had no time to read his question because I'm like, how to improve my communication skill and on various topics. यार ये ऐसा रैंडम तुम लोग लिखते हो हर टॉपिक पे इंसान कैसा आई मीन वेरियस टॉपिक्स पहले तो डिसाइड करो तुम्हारे को टॉपिक कौन सा है हर इंसान हर चीज में थोड़ी ग्रेट हो सकता है आपको अगर से कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी वीजा वी नॉलेज इंप्रूव करना दो डिफरेंट टॉपिक्स हुए कम्युनिकेशन स्किल जिससे इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं आपके लैंग्वेज स्किल्स होते हैं आपका डिक्शन आपका पॉज आपका पिच आपका जैसे आप किसी से सॉफ्टली बात करते हो आपका टोन कैसा है ये सारा चीज कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है आपका पोस्चर कैसा है आपके वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन स्किल्स में आते हैं नॉलेज आप दूसरा बात कर रहे हो आप जीके की बात कर रहे हो जनरल नॉलेज कैसे वो आपको सिर्फ पढ़ के ही होगा ना कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बथेरे कोर्सेज है अमन शुक्ला भी है आई थिंक हिज पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस लाइक दैट एंड अगर से आप उस पे बिल्ड करो ना अपने पर्सनैलिटी पे बिल्ड करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बिना प्रैक्टिस के नहीं आती बिना बीइंग रियल टू योरसेल्फ एंड वाचिंग योरसेल्फ रिकॉर्डिंग योरसेल्फ एंड सीइंग वेयर हाउ डू यू टॉक how many pauses do you take how many fillers do you have it's a very important element of communication so ye sab cheezein jo I don't know if this person is there or here or not but hopefully you'll watch it later and you'll find out okay अब हम जाएंगे YouTube की तरफ Instagram मुझे थोड़ा टाइम दो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन मैंने ले लिए थे अब मुझे एक क्वेश्चन पहले आता ये वाला हो गया था how to set boundaries with friends, families, and colleagues around me. Did you watch my people pleasing video? I think that's a good video to watch. It's from me explaining in like 2 minutes. That's, I think, a good video to set boundaries. And also, तुम लोग को कितने बार मैंने समझाया है ये जो तुम बोलते हो ना set boundaries मतलब क्या you don't know how to say no or they keep let's say you are overweight and they keep talking about your weight. Are you discussing that? What boundaries do you want to set? Is it like तुम खाना लेके जाते हो और तुम्हारे colleagues तुम्हारे खाने पे टूट पड़ते हैं वो भी एक बाउंड्री हुआ राइट आपने उनको ये नहीं बोला है और बाउंड्रीज ये भी हो सकता है कि आप 30+ या जो भी आपकी उम्र है आपकी शादी नहीं हुई है और आपको लोग पूछते हैं अरे when are you getting married that is also crossing boundaries so you have not explained to me Hriday Khanna what exactly do you want to ask me next time all of you all who are asking me a question if it's a very detailed question one-on-one please DM me I will take time but I will reply अगर से छोटा मोटा छुटपुट क्वेश्चन है यहाँ पे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं पर ये वाला थोड़ा सा मुझे जानना है कि हाउ कैन इट बी कि फ्रेंड्स फैमिली एंड कलीग्स all 3 people are like crossing boundaries with you is it you're too sensitive it could be that everything is getting to you it is possible you're touchy so I need to get to know you better and hopefully you will contact me again Ghulam Abbas I'm good okay Balaji no problem Aman Gadbale says what do you think of Apple Vision Pro I have no clue I don't have when I buy the new one I'll for something that other companies are selling for $500 pointless $500 only other companies are selling similar tech for $500 these guys are selling the same shit for $3,500 okay $3,500 $3,500 what is Apple Vision Pro it's the new phone Oculus it's basically it's a virtual reality headset that contains a computer inside it and it's good but not worth $3,500
Okay, so you heard from him, but I'll tell you something. I have been always an Apple user, Apple iPhone सारा दुनिया का ही है, ये भी Mac ही है डेस्कटॉप, पर मुझे नहीं लगता मैं Apple Vision Pro में लूं क्यों, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्यों चाहिए, तो उसके बारे में मेरा रिव्यू देख के बनता नहीं. बट हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट प्लानिंग टू स्विच टू एनी अदर फोन. लोग जो बोलते हैं करके, अरे एप्पल क्यों खरीदते, अरे मत खरीदो ना, जिनको नहीं खरीदना मत खरीदो, जाओ अपना जो भी तुमको सैमसंग अच्छा लगता है, रेडमी अच्छा. सी मुझे लगता है ये फालतू की डिबेट्स छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फाइनली हम वही खरीदेंगे जो हमारे बजट में आती है या जो हमें अच्छे लगता है. ऐसे जैसे मेरे फैमिली में कौन सा फोन है, वो फोल्डेबल सैमसंग किसी की वजह, मुझे उसके फोटोज बहुत अच्छे लगते हैं, इतना फिल्टर है वो अलग बात है, बट कुछ फोटोज उसमें बहुत अच्छे आते हैं. बट आई एम स्टिल विथ माई आईफोन, राइट? आई कुड, मुझे थोड़ा वो बल्कि लगा ऐसे पूरा कैरी करने में. तो ईच वन टू देयर ओन. यस, टेक वॉर जब होता है और टेक के रिव्यूज जब होते हैं तो प्लस माइनस आपको आ जाता है. मैं जैसे आपको बोलूं, लेट्स से टोयोटा है, होंडा है, मर्सिडीज है, पोर्शा है, जो भी आपके जो भी गाड़ियां हैं, ऑडी है, जो भी है, सब गाड़ी जो है, फाइनली हम सब गाड़ी है ना फील्ड में, सब लोग अपना अपना डिसाइड करके लेते हैं अपने बजट स्ट्रिंग, अपने जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, तुमको स्पेस चाहिए, तुमको हाइब्रिड मॉडल चाहिए, जो भी चाहिए करते हैं ना हम लोग. तो रिलैक्स, ऐसे फालतू के क्वेश्चंस पूछ के अपनी जिंदगी का क्यों वक्त जाहिर कर रहे हो. पढ़ लेना कहीं पे, मेरे को मत पूछो ये सब चीजों, मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता. एक सेकंड, आई इंस्टा पीपल, आई नीड टू चार्ज माई फोन. किधर गया, सॉरी, पॉज ड्यू टू पोर कनेक्शन. अरे काहे पॉज हुआ तू, मैं तो तुझे चार्ज करने पे लगी थी. CB meditates, good to see you, how you been? So sorry if I'm reading this later. So CB meditate wrote, as always powerful. Thank you so much. In case you remember, मैंने meditation वाली पॉडकास्ट इनके साथ की थी. और ओए बाप रे, बहुत सारे नाम है. BU, yes DJ, I'll always be myself. ऋषि, अरे ऋषि नशिकर कैसे हो? हेलो मैम, हेलो ऋषि, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू विटामिन डीजे. आकर्षण हाय, बिट्टू पवर हाय, सनी मैम. मैम इस लाइव को सेव नहीं करने की जरूरत है, आप आइए, यूट्यूब पे पड़ा रहता है, यूट्यूब पे कहीं नहीं जाता. नीतीश सिंह राजपूत, कितना डीपली बोलते हो मैम, थैंक यू बेटा. एस बहुत सारे हार्ट्स, थैंक यू. मार्केटिंग श्रेयस कैसे हो? बेस्ट फ्रेंड्स को कैसे पहचाने मैम, मेरे दो फिर बेस्ट फ्रेंड, अब भी तो सिखाया था बेस्ट फ्रेंड कॉन्सेप्ट ना किया करो. यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड. Just look at people as good friends and don't need to have like 0 importance and importance on 10, let's say 10 being the highest. It's okay, बीच में भी आ सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब में कुछ खामियां होंगे तो इट्स ओके. 2 फ्रेंड्स हैं, ऑलमोस्ट 10 ईयर हो चुके हैं, बट मैं आइडेंटिटी 10 साल से दोस्त है, फिर भी दिस isn't this called good friendship? Somebody been with you for 10 years, that's a good thing I think. तो करने की जरूरत नहीं भाई, गो विद द फ्लो. एग्जैक्टली, एग्रीड. पता नहीं भाई, हम सब ऐसे रहते हैं, ऐसे क्लोज नहीं है, बस नॉर्मली बातें करते हैं, तो ठीक है ना. अभी उससे ज्यादा कितना चाहिए आपको लाइफ में, कितना स्ट्रेंजर्स से कितना आप एक्सपेक्टेशन रखते हो आप लोग, सब मेरे को समझ में नहीं आता. दिव्यांग सिंह, आई एम गुड, हाउ आर यू? ओके, ओ आज पता चला कि कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सब हो ही होता है. चलो अच्छा है, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न ना. मैम आई एम फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट, आई वांट टू अर्न सम मनी बट कंफ्यूज, अभी स्किल्स स्टडीज पर इन्वेस्ट करूं या अर्निंग्स पर? फर्स्ट ईयर, इफ यू डोंट नीड टू, ओके, देन व्हाई आर यू? बट व्हेन यू से दैट यू नीड मनी एट द मोमेंट, व्हाई डू यू नीड मनी? गेट दैट क्लैरिटी, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, लोग जो पैसे कमाने लग जाते हैं ना, पढ़ाई भूल जाते हैं. सो ट्राई नॉट टू डू दैट, बिकॉज योर स्टडीज लॉन्ग टर्म इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. अभी वो चस्का लग गया ना पैसे का, फिर आप शायद ना करो. आप वीकेंड्स पे कुछ चीजें ऑन द साइड कर सकते हो. बट इफ यू हैव नोटिस द रीसेंट रिसर्च ऑन साइड हसल, मल्टीटास्किंग, व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर? Workaholism. हाँ, Workaholism. No, not workaholic. The other one, the side hustle, जो hustle करते रहते हैं, I forgot the right word. Anyway, so that kind of thing is not good for your brain. It's not good for your health. So constantly आप लोग trying to prove yourself here, there. You're running away from. You don't know how to be stable. You don't know how to be peaceful in your mind. So make sure that you have that. Yes, you can upgrade your skills on the side. और अगर से सच में घर में पैसे की जरूरत है, you know,
फिर अगर से आप कर रहे हो तो आई कैन अंडरस्टैंड, और स्किल्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करो अगर से पैसे की जरूरत नहीं है. आई वुड सजेस्ट दैट एट द मोमेंट डोंट गेट कैरिड अवे विद मनी, बिकॉज वो तो पूरी जिंदगी आपको बैठ के कमाना है. पढ़ाई करने की इतनी आपको फ्यू इयर्स मिलते हैं, राइट? बाकी टाइम बाद में याद करोगे मुझे, जब मैं आपको याद आएगा कि अरे आई कुड हैव लाइक एंजॉयड माय लाइफ एंड नॉट वर्कड सो मच ऑल द टाइम. भाई सेम ईयर. ओके आशीष, ओए Nitish Singh. Okay, Nimesh is one of my friends, and he's asking, "Hey Rachna, how to initiate the conversation with a stranger, like you initiated with me, with a lovely lady in a new country." So Nimesh is one of my clubbing group members, and I think you're pretty natural, and you yourself, you don't fake being who you are. Be honest, be straightforward. Don't be too blunt. Sometimes it can be hurtful. And this is not just for Nimesh, I'm telling everybody that sometimes we say, oh, we are so straightforward. I am straightforward also, but I'm also, like I told you, somebody asked me something this afternoon, and I was trying, I tried my level best not to be hurtful to that person. So try not to be hurtful. And I think if you're genuine and you are a good human being, finally people will gravitate towards you. And Dubai is a bit of superficial society, so people do look for money. Unfortunately, most of the time, it's not just the women who look for money. Even men are into paisa kamana, paisa kamana, paisa kamana. So which I understand, sabko paisa chahiye jeene ke liye. But it's not very difficult to hold a conversation with any person, because when they're strangers, I know some people go overboard and ask too many questions, and otherwise they're very simple. It obviously starts with naam kya hai, pasand kya hai, whatever. And you should, many a times when we ask somebody a question, all of you learn this, when you ask a question, after some time just listen to them like this. They will fill the sentences after sentences. Why are we doing that? Because we have to give them time to assimilate their thoughts. Some of us, like me, I assimilated very fast. I know what I'm saying. My mind is already on the second, third sentence, right? But not everybody is like that. So don't be in a rush. And don't cut them when they're talking. Be very mindful. I know many times we want to get the person to hear us rather than listen to them. So be a good listener. So these are the chitter-pitter things, and yeah, be kind, and when they are not well, remember them, and when they have their birthdays, remember that. Even if you're not dating them, I think if you have a good group around you, even in your bad times, it's going to take you forward. It's one of those things, okay? Yes, Jyoti. Okay, Nimit, that's good evening. I always fear that I would not get a life partner in future and end up being so lonely. ऐसा काहे सोचते हो आप? Most people do get a partner. You know, I just met somebody who's found a partner at 60, 65. She's my friend. So I don't think ऐसा है कि नहीं मिल सकते. But time लगता है. तब तक अपने लाइफ पे क्या अच्छा चल रहा है उस पर फोकस करो, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो. मुझे लगता है ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, आई वुड सजेस्ट एवरीबडी फॉर गोइंग फॉर पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस एंड फिनिशिंग स्कूल और सम कोर्स ऑन फिनिशिंग, हाउ टू सिट, हाउ टू होल्ड योर ओन, हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक इनटू द रूम. All this adds to that aura that we have. Some of us naturally have it. Some of us have to work on it, right? It took me years to be the person I am. I never had these schools and colleges. खुद सारे ठोकर खा के हमको सीखना पड़ा. आप लोग ये सीख सकते हो. आजकल बहुत लोग ये सिखाते हैं. If you remember, I did a dining etiquette वाला podcast with Tina. So many of these coaches which are there, follow them and learn from them. भाई कितनी ब्यूटीफुल है. कौन कितनी ब्यूटीफुल? आई डोंट नो, मेरे से बोल रहे हैं किसी. ज्योति, काफी लड़के हैं दुनिया में. पता नहीं किसको बोल रहे हो आप लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो क्या? ओके, नाउ आई विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम हाय मैम, ब्रेकअप का बोल रखा. अच्छा, ये सारे क्वेश्चन इंस्टा अभी आपके क्वेश्चंस हो गए. अभी मैं यूट्यूब का क्वेश्चन. हाँ, तो किसी को जूम पे कुछ बोलना है? कोई आया है?
मेरा तो गला गया। हाय अर्चित, कैसे हो? तू मेरा बर्थडे भूल गए हो, बाय द वे, आई एम रिमाइंडिंग यू। और आर्यन तू भी भूल गया है। और ईशांक किधर है? ईशांक वो भी भूल गया है। सिर्फ बालाजी को मेरा बर्थडे याद है, और दूसरे को जिसका मेरा मेगा को मैंने अभी तक विश नहीं किया बिकॉज आई हैव समथिंग प्रिपेयर्ड। आई एम वेटिंग, कम Yes, ma'am. ऑन। मेगा को याद मुझे है। याद। मैम इंस्टाग्राम खोलो आप, अच्छा, लास्ट ईयर का मेरा कैसे पोस्ट। करूं अभी? अभी नहीं, जब आई खत्म हो गया। हाँ, यू सी इंस्टाग्राम लेटर यू विल अंडरस्टैंड। ओके ठीक है, ओके डन। And ma'am, that day I just got so happy because you also remembered my birthday. Of course, and I think अभिजीत का बर्थडे भी सेकंड को ही आता है, तो उसने मुझे डिस्कॉर्ड पे टैग किया, so then the others knew that it's my birthday, so that's how it went. I know I was supposed to go live, so it's my fault also कि मैंने तुम लोग को याद नहीं दिलाया, it's okay. और वैसे भी मुझे आर्यन, I think I have wished because टीम के बर्थडे मुझे याद रहते हैं, मैंने कैलेंडर में डाले। अर्चित, आई एम सॉरी, मैंने आपका बर्थडे नहीं पूछा कभी, तो इट्स ओके इफ यू डिडंट रिमेम्बर। Okay, next. ओए भगवान, इमू नमस्ते। इजुजू आमी इंडिया में, अच्छा वो मैंने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया कॉर्नोग्राफी का, ठीक है। तो ऐसा होने नहीं वाला है, ऐसा अपने देखते रहो, तब तक अपने आप पे फोकस करो, एक टाइम पे एक चीज करना अच्छा है, इन ओपिनियन। यस अद्वितीय, आई अग्री विथ यू, मुझे याद था आपको बताया, यस आपने भी विश किया थे। और ये जो आर राज, अच्छा राज है ना कि श्रीराज, आई डोंट नो, हैप्पी बर्थडे मैम, थैंक यू। Okay, so we are doing so good today. I'm so proud of myself. Sangeeta Tandon, I'm still searching in Chicago dance partner. That's my friend. Sang, I'm so lucky, I must say. I'm very, very happy. Nimesh and Carol and my entire group, like we party till 4. Why have you deleted by Rishika? What message was it deleted? It was some toxicity. It's okay. I like to read. I support. Calling, well, she was अच्छा calling other अच्छा, people. एंड्रॉइड रेट वाली कोई आई है? ओके। अरे एंड्रॉइड रेट वाली, इंसान को समझो, ये जेंडर नहीं खेलो बेटे लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्किटल्स है क्या? कौन? अरे जेम्स जैसा होता है किसकी और मैं, हाउ डिड आई मिस सो मच? अरे गौरव, अच्छा हाय, हाउ oh my god, I missed so much chat on bloody YouTube. I didn't even see. I'm so sorry. I'm so sorry. We were talking YouTube पे. Don't worry. हाँ, I answered everything. just give me 1 sec, guys. I'll just be back. Sorry. Okay. To my hubby was going for a flight. में देख रही थी प्रसाद खाएंगे. So हम as usual हम लोग Indians है ना, before we fly we do all this. So happy belated birthday. Sorry to miss the date. It's okay, Archit. It's okay. I didn't realize YouTube पे इतना chat आया, तो oh mother of Jesus Christ, मैं कहाँ से start करूँ? Okay. हाँ, okay. Alishba, hi. I'm good, beta. How are you? Ravjot, hi. Rachna ma'am for president, as written by people, and Aryan here, the fat wheeler. Himangi, hello, beta. How are you? I hope you're well. How did I enjoy my birthday? We had a big celebration in Jakarta. Like there were like 70-80 people, and it was really good. Rajat, kahe tune message retract kiya, beta? Hello, ma'am. How are you? I'm good, Alishba. Again, Jitendra. God can't reach everywhere, so he sent you to solve their problems. Thank you. I read that on Insta. So thank you for reiterating that. Hello, ma'am. What's up? Don't mind. No, I don't mind. Madam Terminator is back. Call me that. Okay, ठीक है. No, Queen Rajmata. Thank you. क्या क्या नाम रखे हैं? देखो, Terminator, Rajmata, Superwoman. तो नहीं क्या मेरे Queen. मुझे कितने सारे नाम मिलते हैं यहाँ पे. By the way, lovely background. Thank you so much. Don't mind. Leonardo DiCaprio is introvert, and so are lot of businessmen, lot of them. Ma'am, my dad is verbally abusive. We've been in touch, if I remember you very well. Is verbally abusive and और हमेशा से मुझे criticize किया छोटी mistakes पर. Because of this, I've lost interest in socializing and I don't even attend function or go out. See, that's जहाँ पे आप लोग mistake कर रहे हो, right? क्यों? Just because one element of your life is problematic, why are you creating more problems? अगर से आप family function में जाते हो, you don't have to stick to your father, ना?
go meet other people. ऐसा तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ेगा यार. हमेशा हम लोग इंसानों को चेंज नहीं कर सकते, हमको अपना लाइफ चेंज करना होगा. और जैसे तुम बड़े हो जाओगे, एज आई सेड, इफ यू थिंक यू कैन नॉट स्टे विथ योर पेरेंट्स and they are really bothering you and it's affecting your mental health, then that should be your choice if you want to stay or not. But beta, please don't do this. This is not good. You should not lose interest. Instead, that is going to take you out of this thing, because what are the other good things that you are doing in life that rather than सारा टाइम वही किट रहेगा, तुम ठीक कैसे होंगे, तुम खुश कैसे होंगे? You should not give anybody that much, including your if your father is verbally abusive, right? You, let's say whenever he is not there, let's say God forbid whenever he passes away, by that time you will be like what, in your 40s? Then you will have missed out such great times of your life. Go make friends, go do some courses, go join some classes, go have fun, beta. Don't let, I mean, you have an option to go out, right? It would be different if you're like tied down or something in your house. You're not. Please खुश रहो, अपनी खुशी खुद बनाते हैं. I've also had like a difficult childhood, right? हमारे टाइम पे हम एक छोटे विलेज में रहते थे, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे जिंदगी एंजॉय करने की. आपके अगर से हैं तो प्लीज गो अहेड एंड डू इट, ठीक है? Yes, ma'am. People who can speak is not necessarily good for you. I know my friend who can speak, but always speak a lot of lies. Exactly. Thank you so much for pointing out. Even I know people who speak a lot of shit. And sometimes it irritates me because they exaggerate so much, they lie so much, they fib so much, they brag and brag. So not necessarily all the time people who speak are speaking sense, right? Sometimes it's okay, you know, and it's completely okay if you don't speak that well. But अगर से जितना भी बोलो, अच्छा बोलने की कोशिश करो, और अच्छे इंसान रहो, किसी को unnecessary hurt मत करो. तुम्हारे वो communication skills में अगर से आपने डाल दिया ना कि be nice to someone, अपने आप most of your things will be sorted automatically. Don't mind how old are you. I have said it many times. In June, on June 2nd, I turned 52. Yes, I am 52. I'm not ashamed to tell you all that. I We do am. not believe you. What? Sorry? You look too good for 52. We do not believe you. Thank you. I know people don't believe, and I have to sometimes when I meet people in real life, I actually take out my ID card and I say, see, 1971. Because people are like, nee, it's not possible. So I don't take credit for it. My parents should take the credit. And yes, grooming matters. आपका mindset matter करता है, आपका diet matter करता है. आज जैसे मेघा हमेशा मुझे पूछती है तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया. So इस 3-4 हफ्ते में मैंने जितना कचरा खाना था ना, मैंने खा लिया. तो अब मुझे आने के बाद if people have not noticed तो मेरे cheeks निकल आए हैं, ठीक है? क्योंकि obviously जब तुम vacation पे जाते हो, you end up eating a lot of the time. So when I have come back, I have today full day, yesterday as much as possible, although I went for a movie, so I can't really say it healthy yesterday. But today I tried my level best to start my day with juice. Then I had a sweet potato. Then I had an egg. Then I had tomato juice. Then बीच में और भी कुछ खाया, मैं भूल गई क्या खाया. हाँ, फिर मैंने सूप और चावल खाया क्योंकि कार्ब्स चाहिए था, आज ये सेशन करना था. I needed some energy. So बैलेंस रखो, अच्छा खाओ, टाइम पे सो, ज्यादा ड्रिंक मत करना. कभी कभी ड्रिंकिंग इज ओके, स्मोकिंग इज अ कंप्लीट नो. ओके, वीड, ड्रग्स, साइकोडेलिक्स, everything is a no. Okay, drinking sometimes is okay, not too much. Drink green tea, drink coffee is good for health, not too much. Coffee से jitters होते हैं, तो be careful. If you're oversensitive to coffee, do not take too much of that. Red Bull, I was watching one of the doctors that I follow. He was saying Red Bull is not necessarily bad unless you mix it up with a lot of alcohol and mix it up with other stimulants. The right word is stimulants. And ma'am, मुझे भी याद था आपका birthday. Thank you, Aditya. Yes, I just read that. Thank you so much, all And of ma'am, you. this mindset thing which you said is just so correct, ma'am. Mindset thing. I was not realizing its importance before, ma'am. It's so important. It's like its impact and everything just gets very clear on your face, on your body and everything. It impacts अब us कुछ so. पता चलेगा. अभी सपोज तुम अभी एग्जाम का दुख लेके बैठी हो, तुम करके हंसने मेरे वाली हो, ठीक है? Yeah. Yes, दुख तो ma'am. आएगा, पर अगर से सपोज आज के लिए हम रोए,
ठीक है, हम कल भी रोए, चलो ठीक है, पर अगर से आप रोज रोज ना सो रहे हो, सिर्फ स्ट्रेस ले रहे हो और सिर्फ रोते जा रहे हो और जिंदगी में कंप्लेन करते जा रहे हो, तो कैसे तुम्हारे फेस पे रिफ्लेक्ट होता है ना, जब तुम खुशी होते हो रेडिएट होता है कि नहीं होता है? तुम Yeah, कितना yes, ma'am. मेकअप थोप लो, मैंने लोगों को देखा है जो बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तुम कितना भी उनके मुंह पे मेकअप थोप लो, वो लगते हैं कि कहीं ना कहीं समथिंग इज मिसिंग। Yes, yes, ma'am. अपना अभी से, and you people are so lucky, you know. Nobody told me this when I was young. ये तो natural Yes, ma'am. कि I turned out to be, I had so much shit in my life to deal with that at one time, I decided, okay, I cannot take so much stress. I decided to be very focused on the stress that I take. I take very selective stress. Like only like 5 to maybe 10 people in my entire life, imagine 52 years, only like 10 people affect me. Can you imagine how much it takes that kind of mindset to say, okay, the rest of the world, go back into your space. You do not encroach my space. You don't stay in my mind. And yes, I'm not saying it will not bother you tonight or one more. उसके बाद बहुत important है to say निकलो निकलो निकलो, क्लियर करो, जैसे हम टेबल Yeah. जैसे अपना स्पेस एनर्जी फील्ड क्लीन कर रखना चाहिए। अंदर मैम इंटरनली जो अच्छा Yeah. फील होता है, makes you feel happy. Like recently, all of the shit went down in my life. I was just like, you know what, ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना है होगा, अब क्या, rather than being sad about whatever happened, I'm like, ठीक है, let's start working on this. And I never took stress about it. So now I am actually in a place where I work for it and I'm good. I feel happy, truly happy now. And I don't think that would have come if I would have been sad. I was in the past, like, so colleges ka last year what happened, my parents did not let me go to a different city where I wanted to go, and I was literally heartbroken due to that. It took me half a year to just settle down in my own city. Now my parents are changing colleges every day. They're like, you can't go here, you can't go there, but whenever they tell me about a new college, I'm like, okay. I take a minute, I close my eyes, I breathe, and I see, okay, this is good about this college, and this is how I'm going to do. I just thought that surroundings won't affect me. I will work hard and I will make any college work. And I felt good. I felt positive. Now, no matter what changes, nothing is, making me go crazy. Nothing is unnerving me. It's literally awesome. मेगा तुम कुछ कह रही थी? Yes, ma'am. Actually, when you were talking about that state where you have come in, where not so many people are affecting you, I think so much of, self, what is that word? I'm not getting it. Ma'am, I'm not getting that word right now. Like self-awareness. Yeah, yeah. Yeah, so much of self-awareness is needed for coming to the space where you are in, like understanding that how much of people can affect you and how much of things can, so much of self-love and self-awareness will lead to that state where you have come in. Huh? Just Yeah. one second. And one more thing. Ek minute, wait. Anybody on Insta wants to go live with me, I would suggest do it on Zoom because I'm in Dubai. It doesn't allow me to accept most live requests. Same thing applies on this thing. क्या बोलते हैं Zoom. So please आके Zoom पे आप मेरे से बात कर सकते हो. You can share the screen with me like the others are. Yes, Mega बोलिए. Yes, and that thing about college, which Aryan was saying, ma'am, I think the kind of era where we are living in right now, it doesn't matter where you are. Like you can learn anything just being anywhere. The physical boundary, the place, and anything just doesn't. We just need to be curious. We need to be very much inquisitive in order to learn. And I think that would suffice, na, ma'am, because even I am having a bit of insecurity regarding college. So I think if we are just putting in all the effort in learning things by our own self, by developing enough amount of like curiosity and kind of stuff, then we can be at par with the people who are like who are more privileged than us, isn't it? Yeah, exactly. Because हर चीज इंसान को तो नहीं मिल सकती और हम तो उस जमाने से आए हैं और उस कॉलेजेस से आए हैं जिनके नाम ही नहीं होते थे, फिर भी we all are doing well for ourselves. So it's just about the hard work. Finally, you will थोड़ा
एक्स्ट्रा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, बट यू कैन फाइंड योर ओन. हाय संगीता, नाइस टू सी यू हियर. हाय, मिस यू. And Gaurav, hello ma'am, seen you after many days, wanted to talk to you but have to go. Okay, no problem. I know I started the stream a little late. There was a reason. Today I had to go and meet my orthopedic. So मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए मैंने, और कल फिर I have to visit somebody, so I could not do it. क्या है मैम, अगर भी कुछ बुरा हुआ तो फ्लैशबैक्स क्यों आते हैं, इवन दैट हैपेंड अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो यू सी, हमारा माइंड और हमारा ब्रेन इतना फ्रजाइल होता है, स्पेशली जब हम यंग रहते हैं, और कुछ चीजें हमको बहुत, और हर इंसान को अलग इफेक्ट करती है. सेम चीज एक्सपीरियंस शायद किसी और के साथ हो, वो इंसान ना हो. कुछ हम किसी किसी के इनेट टेंडेंसीज होते हैं जो उनको बुरा फील होता है, और उनको ज्यादा देर तक वो प्रोलॉन्ग ट्रॉमा में रहते हैं. तो इसका आंसर किसी के पास नहीं है कि ऐसा इंसान एक इंसान के साथ हो तो दूसरे के साथ, क्योंकि अंदर से हमारी सबकी पर्सनालिटी इतनी अलग होती है, ट्विन्स की भी. एक ट्विन वो, लेट्स से हमारे घर में हम जो सिबलिंग्स थे, हमारे पेरेंट्स जब सेपरेट हुए, हम तीनों ने इतना अलग तरीके से वो सेपरेशन को लिया है. यू वुड बी शॉक्ड कि how can it be possible siblings sync. So imagine, so because we are all born with that, some take it more harder, some take it like fuck it, यार क्या फर्क पड़ता है, देखा जाएगा टाइम. some are somewhere in the middle. So तुम्हारे को वो जो चीज इम्पैक्ट की है, इट कुड बी करके समथिंग तुम्हारे को किसी ने एम्बैरेस किया है, या सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है वीजा वी लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट गो थ्रू लाइफ. And Saran, thank you for your birthday wishes. I know you wished me on Insta. I was about to read it and then किसी ने और कुछ बोला. Thank you so much. आपका गाना पेंडिंग है, आपको अभी गाना गाना है मेरे लिए. हाय सारन, कैसे हो? ठीक से सुनाई नहीं दे रहा. तुम्हारा सिग्नल का हमेशा से इशू रहा है ना, जब तुम डिस्कॉर्ड पे भी आते थे तब भी. कुछ बोलने वाले हो कि मैं किसी और को बोलने लगा हूँ? सारन कुछ बोल नहीं रहे हैं. ये सारन को एड. Yeah, so I have a sort of a question slash situation of my own. You know, एक मिनट. So सारन, पहले तो अपना ऑडियो फिक्स करो so that you can sing a song. So Sarim is going to hopefully sing a song for us, and basically for me because it's my birthday. तब तक आर्यन कुछ बोलेंगे और सारिम अपना ऑडियो फिक्स करेंगे. हाँ बोलिए सीता. So I have been having sort of PTSD due to that past. I am finally over that person, but Okay, 1 second, sorry. Whoever has PTSD is post-traumatic stress disorder, first and foremost, that's what it means. Second, there are ways to overcome it through hypnosis and EMDR. If you have any of that, contact me. You can do yourself EMDR. I don't do it anymore online, so I can give you the resources to handle it. Yes, Aryan, go ahead. yeah, so I am over that person, but not being in love is weird. Not, having all of those feelings, it feels weird. It feels like all of that time, all of those efforts, all of that, it means nothing anymore. It's all gone. It's useless. It's nothing. It just, that's something that is kind of affecting me. I have breakdowns. I literally, so like I'm always talking to them still, friends give me a call. They need to talk about their own stuff. So I never talk about my own feelings with my friends because I want to solve their problems rather than tell them mine. So like I literally, in the middle of the night, I'll go in the shower, turn off the lights, play music, and then cry in the shower. Whenever I'm like totally bubbling up and having fits, I had a seizure literally when I was outside, and I just got myself back up somehow and came home. And it's getting severe, and I am dealing with it, but I don't know what step I should take. I don't know why it's happening. Even now? Yeah, now this is like a recent 2-3 days wala thing. Okay. Are you taking the supplements? You contact me later. I'll send you something. Have you tried the EMDR? Not exactly. I don't know. After this thing, so send me an email again. I'll tell you what supplements to take and what this thing to do.
the EMDR, I think you need it. And I need you to also, this is also almost like a panic attack you're having, right? It was. Yeah, it's worse, right? So basically, it's also to do with your mindset. It's Yeah. with how you handle it at the moment. And if, are you taking ashwagandha every day? No. Okay, I'm please taking some start taking Ayurvedic that. medicine. No, you need to take ashwagandha. It helps you to stay calm, and it's natural. I don't want you to resort to pills and stuff at this age. So let's try to find. And are you taking a multivitamin every day? Have you checked your vitamin D, the B12, the omega? It's very important. Magnesium. All this is important with your mental health. It's when you're having these attacks. Also, all these supplements are so important. So I'll give you the thing. Please do your research and make sure. I think my mother is. I think so. Hi, Ma. You. I didn't take it seriously actually. So I have a lot of history with panic attacks. So I just thought it's okay, it's just panic attacks, it's no big deal, I'll handle it. But a few days ago, like it was around 6, 7 a.m., I had 3 to 4 panic attacks, one after the another, and my body just started vibrating very badly, and I could not stop. I couldn't breathe. I was having a lot of issues. I didn't know what to do. So I was just like, okay, this is getting serious. I need to do something about it. Okay, you never told me this. You only tell me the good things lately. I did not take it seriously myself. I told no one. But what is triggering it? Sometimes when I something related to her comes up, like it feels weird that that person means nothing to me now. Even that feels weird because how obsessed I was. Yeah. So it's going to take you time, but I can I give you couldn't do something that. for you're having nightmares basically. I'll give you something to even rewrite nightmares. Very important. It's one of the very in and very successful techniques to get rid of this kind of what you are experiencing. So you'll have to do a couple of things, It is but on you my have to hand. be diligent about it. You cannot like do it once and expect things to Her be. name is like inscribed on my skin now. So I used to like write her name on my hand with a cutter a lot of times now, long ago. So now sadly it's become permanent. Like on my skin itself, it's like a deformity. So I can look at her name if I look at my arm. Jesus Christ. I know. Okay, everybody, Don't do what this. he did this, don't do it. Wrong. गलत. कभी किसी का नाम या वा या शा नहीं करने का, ठीक है? शादी भी हो जाएगा तो नहीं करने का. क्यों? क्योंकि you should love your body. You should love yourself first. You should not love somebody like this is like beyond understanding. I know it sounds so romantic. I wish I had a guy who loved me so much and wrote his name and like, oh, but do you understand what happens to the person then when you don't love them enough? Because they're constantly looking for the love and it raises the expectation and increases the disappointments, right? So be careful. You don't, and he's such a good boy. I feel like I wish she had said yes to him, okay? But maybe she was not meant to be, maybe she saw this about him. I don't know what was the reason that she said that she wants to be with whoever and but not be in a relationship. And look at how he's taking it. He's overcome it to a large extent. From the time I knew him, it's been what 3 years if I've been here. I know you for 2 years. Something like Yeah. that. Yeah. So he has come a long way and he's still having those. So I'll give you something for nightmares and for your panic attacks. But all of you all, बच्चा लोग stop loving anybody more than yourself. ये कैसे कर लेते हो तुम लोग? इतना नहीं करते यार. Like अपने माँ बाप को प्यार करो, वो इतना प्यार करते हैं आपको. आप अपने आप को प्यार करो, आप अपना ध्यान रखो. अगर से कोई आपको रिटर्न में प्यार नहीं करता, you're not supposed to hurt yourself. You're not supposed to go like they don't deserve that kind of that worship. Don't worship people, yeah. Love them, care for them, be kind, be good, but above all, be good to yourself. What is this, self harm and all? जो भी self harm करता है, आज कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास self harm जो करते हो. Please find another way to deal with your stress and anxiety. Please, 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 please. There are And- lots of healthy ways to handle your anxiety. We believe it. And don't use substance abuse as a way out as well. I Yes. started taking to keep my mind calm and I got addicted.
Yeah, please don't take supplements, do exercise, do meditation, use hypnosis, play a sport, listen to me. किसी ने बोला करके since she listens, वो हमने delete कर दिया अभी आर्यन कमेंट, but उसने ये लिखा करके when I listen to her talk, ऐसा लगता है amongst very smart people or sorted people. So please follow sorted pages, learn from them. I know हम भागते रहते हैं, right? दुख अच्छा नहीं लगता, यहाँ तकलीफ होती है, दिमाग ओवर टाइम चल रहा होता है, ठीक हो जाएगा. थोड़ा सा पेशेंस रखो, हमेशा ऐसा नहीं फील करो. सारे गाना गाने के लिए रेडी है? तेरा माइक ठीक हुआ कि नहीं? ऑडियो यस नो? हेलो, हाँ बोलो. हाँ एम आई ऑडिबल? हाँ बट मैं वीडियो पे नहीं हूँ ना. हाँ नहीं आना है वीडियो पे आज? मेरे को आता नहीं है. अच्छा आता नहीं, उधर आता है, उधर जिधर माइक है ना उसके बाजू में सीधे राइट बगल में वो वीडियो का साइन होता है. चल कोई बात नहीं, गाना गा रहे, हम सब सारिम का गाना सुनेंगे. ओके स्टार्ट. पहले मैं ना उससे एक बात कहना चाहता हूँ, कह सकता हूँ? जी बोलिए. मैंने भी एक नई चीज सीखी थी. मैंने भी एक नई चीज सीखी थी, तो उसके अंदर मैंने ये नोटिस किया था कि प्यार और रोमांटिक लव दोनों चीजें अलग अलग होती हैं. ओके तो उस तरीके से मैं आपसे प्यार करता हूँ. थैंक यू. So ये They're like he just wrote to me yesterday that he loves me. Ishank said he loves me, so I get all the love and I understand it's not romantic love. So thank you so much for it. Thank you. ओके ओके. अच्छा मेरी आवाज आएगी तो बता देना, ठीक है? क्या तुम्हारी क्या मेरी आवाज गाने की आने लगेगी ना, गाने हाँ. वाली तो बता देना. मैं ऐसे करूंगी इधर सुनाई देगा, ठीक है? आ रही है? हाँ म्यूजिक. ठीक है. कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार इकरार दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मतलब, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ. सदाएं सुनो, जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी बना तेरे सदके उठाए. है तमन्ना तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यार, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां. कभी सुन लो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा. दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ. Wow. Everybody give a clap. I hope. Awesome, Sarim. As usual, तुम्हारी आवाज तो amazing थी और गाना भी मेरा one of my favorite songs. And people have written what a beautiful voice you have. And Sarim has been part of my Discord since we've been like I know him for quite some time. And yes, even Megha has written he's so good.
अमेजिंग सारे, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। ओनली क्या होता है ना, म्यूजिक और गाने में, जब म्यूजिक बजाते हो ना तो गाना जूम में थोड़ा लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइम हम बिना म्यूजिक के गाना सुनेंगे। नहीं अरे, दैट्स व्हाट एंड हैपेंस राइट। ऑनेस्टली मैम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मेरे को लगा कहीं रेडियो पे वगैरह वो सॉन्ग चल रहा है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड लाइक सिंगिंग इट। वाओ, आई थॉट इज द ओरिजिनल सिंगर। He's a very good singer. You have not heard him? He sang, I think this उसके सारेम अपना पेज पे भी गाते हैं तो, so सारेम की भी अपनी कहानी है राइट सर। वो तो है ही मैम, बट मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, मेरी जिंदगी बच गई। आप जब से मेरी जिंदगी में आई हो, मैं बहुत अच्छा हो गया मैम। मैं बहुत बुरा इंसान हुआ करता था, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। You guys are so sweet. Thank you. ओके, मैं एक सेकंड, मैं आपको बिना उसके म्यूजिक के सुना दूं? दूसरा सॉन्ग भी यही वाला है? आप बताओ, आपको कोई अगर स्पेशल सुनना हो तो। नहीं, कुछ और सुना। आपका फेवरेट कौन सा है? ऐसा कोई फेवरेट नहीं है, सब अच्छे लगते हैं मुझे वैसे तो। तुम्हारी आवाज में जो भी तुमको लगता है तुम अच्छा गाते हो, बिकॉज ईच वॉइस हैज इट्स ओन वॉइस क्वालिटी राइट, विद द सॉन्ग फिट्स। सो लाइक दिस सॉन्ग इट परफेक्ट फॉर योर वॉइस, सो ऐसा कुछ सुना। ओके, म्यूजिक के अंदर क्या गड़बड़ी हो रही थी? तो म्यूजिक क्या तेज होता हो है ना, रहा था? म्यूजिक चला जाता है, फेड हो जाता है, आता है, फेड हो जाता है। पहले भी हुआ है जब हमने, यू रिमेम्बर, हमने एक बार डिस्कॉर्ड पे भी ट्राई किया है, हमने ऑनलाइन भी, हमने जब एक म्यूजिशियन को, आई थिंक वो भी सब्यसाची आया था और किसी ने गाना गाया था, और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाते बजाते गा रहा था, म्यूजिक पूरा क्लैश हो रहा था, म्यूजिक एंड वॉइस। ओके, हु इज दिस? ये फ्यूजन फोरम कौन है? राज। अपना राजनशी कर। हाँ मैम। तू अपने नाम का ही चेंज करते हैं तू, हम कैसे पता चलेगा? अरे मैंने अपना गूगल अकाउंट किसी को यूज करने दिया था, अपने भाई को छोटे, तो बताएं उसने क्या कर रखा है। ठीक है फ्यूजन जी, रुकिए जी, अभी सारे दूसरा गाना सुनाएंगे जी। आज तो मुशायरा हो गया लिटरली, लाइक शायरी सुनाता हूँ आगे। सॉरी गाइस जिन जिन के क्वेश्चन है, और अगर से मैंने आंसर करो मुझे माफ करो। आज मेरे बर्थडे के लिए लोग मेरे लिए गाना गा रहे हैं और विशेस कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि किसी का क्वेश्चन अधूरा रह गया और मैंने रिप्लाई नहीं किया, डीएम करो, आई शैल रिप्लाई टू ऑल। और किसी ने अभी कुछ मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, एक कॉम्प्लीमेंट पढ़ लेते हैं आपका। स्वाति इज लाइक, हेलो मैम, हाउ आर यू बीन, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू एज यूजुअल, बट इवन एज यूजुअल इट्स नाइस टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू पीपल, थैंक यू। अच्छा सारे रेडी? Okay. Yes, I am just here. Hey, don't mind, एक मिनट, please make a video on how to write a journal. भाई देवा परमेश्वरा 1.5 hours का तो वो मेरा प्रेजेंटेशन था, how to journal. थोड़ा हमारा चैनल फॉलो कीजिए प्लीज। हाँ, क्या आवाज है भाई साहब, कौन है ये, किसका आवाज है? कोई नया ज्वाइन किया क्या? ये सारेम का ही है? हाँ मैम, मेरा ही चल रहा था ये। मैम एक्चुअली पता है बात क्या है? बात ये है ना एक्चुअली कि ओ एक बार चांद बालिया, he wants, मेगा wants चांद बालिया, you know how to sing that one? चांद बालिया मुझे आता है। चांद something I don't know the lyrics. Yeah. ओके, ये सॉन्ग तो स्पेशली आपको डेडिकेटेड है क्योंकि आपसे मिलना मेरा रह गया है, तो हमारा मिलना हो नहीं पाता है। जब आप आते तो हमारा मिलना हो नहीं पाता, तो ये स्पेशली आपके लिए नहीं आ रहा बाबा, क्या बोल रहा है, एक शब्द समझ में नहीं आ रहा। पहले तो भी सुनाई दे रहा था, तुम मैं अपना, ये कह हाँ अभी ठीक है। हाँ अब क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि हमारा मिलना रह जाता है इंडिया। क्या रह जाता है? क्या मिलना? हाँ मिलना, मैं तो इंडिया में किसी को, मैं आज तक किसी फॉलोअर, सब्सक्राइबर, टीम मेंबर किसी को नहीं मिली हूँ, ठीक है तो। एंड वी आर वेरी एंग्री अबाउट। तो मैं 4 लोग आएंगे शायद, मेरे को 4 भी नहीं, मेरे को लगता है एक ही इंसान आएगा, हर सिटी में एक इंसान आएगा मुझे मिलने, तो मैं क्या मीटअप रखूं, मेरा वो पॉपुलैरिटी लेवल नहीं है करके मैं सपने देखूं। हाँ
अच्छा, तुम्हारा वीडियो ऑफ नहीं करोगे तो सारे में तुम्हारी क्वालिटी अच्छी वॉइस की नहीं आएगी. इट्स गुड, द बैंडविड्थ इज टू मच, ओके ओके टेकिंग टू मच बैंडविड्थ. कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो. Everybody on Insta who's asking me to go live, please come and join my Zoom. Link is in the story. If not in Okay. IT community, I cannot. I tried accepting your request to go live. It is not accepting. I cannot. Even my mother's request, I'm not being able to accept. Mom, please come on Zoom. Huh. Okay. So should I start? Yes. ओके मैं गाऊंगा तो मैं म्यूजिक के साथ ही, मुझे मजा नहीं आता बिना म्यूजिक के गाने में. थोड़ा सा आप ना वो कर लो, ठीक है. क्या कहते थोड़ा हैं? म्यूजिक बैकग्राउंड में बजने दे और तेरी आवाज ज्यादा आने दे. ठीक है, ये उल्टा हो रहा है. म्यूजिक आ रहा है, तेरी आवाज बहुत जा रही है उसमें. ओके ओके ओके, मैं उसको ना अभी ठीक कर देता हूँ, अब ठीक आएगा. कोशिश कीजिए. ठीक है, अब ठीक आएगा, इस बार ठीक आएगा. अब ठीक है. ये अलिशबा के लिए ये शेड. इस बार ठीक है ना? हाँ इस हाँ, बार ठीक है. बेटर थी ना. अरे हाँ ये बेटर. ओके, अब ठीक है. अब ठीक है. हाँ, म्यूजिक ठीक है. ओके. तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है. तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है. क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर कहाँ पे जारी है. बड़ा अच्छा लगता है. तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है. क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर कहाँ पे जारी है. बड़ा अच्छा लगता है. तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है. तेरी छोटी छोटी बात, तेरी हर मुलाकात कर मैं मुझको लम्हा लम्हा तेरा, लम्हा लम्हा तेरा. क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर कहाँ पे जारी है. बड़ा अच्छा लगता है. तुमसे मिलना, बात करना बड़ा अच्छा लगता है. बहके बहके मेरे दिन, महकी महकी मेरी शाम, कोई आंचल के सना मैं तो लिखूं तेरा नाम, मैं तो लिखूं तेरा नाम. क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर कहाँ पे जारी है. बड़ा अच्छा लगता है. तुमसे मिलना, बात करना
I'm so lucky to have you all, and Saran, thank you for the song and so many birthday wishes here, YouTube and all the. I'm so touched. Thank you, Saran. That was wonderful. As I always said, you have an amazing voice, and thank you for making my birthday special. Sorry, बर्थडे ट्रीट दिया नहीं है मैम सुनाई नहीं दे रहा है। कौन बोल रहा है? क्या- राज, तुम बात कर रहे हो? कौन बात कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ राज हाँ, बोलिए बेटा, बोलिए। मैं का बर्थडे ट्रीट दिया नहीं आपने यस, उन्होंने बर्थडे विश दिया कि ट्रीट खाने लायक हो कि नहीं तुम लोग? नालायक मैंने लोग। मैसेज किया अभी I will- मेरे को अभी पता चला बर्थडे हाँ एग्जैक्टली, इतना मैम ने मदद किया है। मेरा बर्थडे भी कोई याद नहीं राज, हाँ? ऋषि को याद नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुझे याद नहीं। मैं खुद और इंस्टा ऊपर पे से उसका ऑडेसिटी तो देखो, साला ऐसे ट्रीट मांग रहा है। शर्म कर, ऐसे बोल मैम ने आपका birthday अरे, बोल दिया, क्योंकि तो आप आर्यन लाइन ने- नहीं आई थी तो मैं आपको ट्रीट दूंगी। हाँ क्या? जूम चैट पे मैंने विश किया अभी थोड़ी देर पहले तो वो बोलने के बाद मेरा लैंग्वेज बहुत गंदा भी हो सकता है। सम आर विटनेस टू इट, सो जरा बी केयरफुल। तुझे कुछ बोलना वही तो मैम का प्यार है, वही- गुस्सा भी प्यार से करते हो आप बड़े हाँ, तो गुस्सा बड़े प्यार से भी निकलता है मेरा। ट्रू। मैम वैसे आदित्य को याद था तो आदित्य मुझे ट्रीट देगा, मैं उससे ट्रीट दूंगी, ठीक है? और जिसने मैम याद मैं किया था आपको मेरा वो ट्रीट ट्रीट मिलने वाला दूंगा है। क्योंकि मैं दुबई आ बालाजी रहा को ट्रीट मिलने वाला है। और भी 3-4 नहीं, एटलीस्ट 10 लोगों ने इंस्टा पे मेरा, आई शुड नॉट कंप्लेन, इंस्टा पे लोगों ने मुझे विश किया पर उनके नाम याद नहीं आ रहे, सॉरी। तो बट हाँ, जो उनके याद आ रहे मैं अभी बता रही हूँ। मैम मेरा ट्रीट के लिए पोयम लिखी है वैसे। अच्छा, तूने पोएम लिखा है तो पोस्ट कर दिया तूने कि यहाँ बोलने का? अभी सुनाता हूँ आपको। अच्छा ठीक, और पर उधर भी पोस्ट करना है, इंस्टा पे स्टोरी पे डालेंगे। I wrote it just now, so it's not that furnished, but okay. Send me the complete version then, okay? This is complete. This is the complete one. अंधेरी राह पे अकेला चल रहा था मैं, मुझे आवाज दी किसी, मेरे साथ कोई है, एहसास दिलाया किसी, मुश्किलों से निकाला मुझे जीना सिखाया, बिखरे मेरे दिल को जुड़ना सिखाया, पत्थर से मेरे दिल को मोम बनाकर उस बिखरे टुकड़े को फिर इंसान बनाया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स का जो अंधेरे में आकर रोशनी मेरी बन गया। मैं एहसानमंद हूँ उस शख्स का जिसने सहमी सी इस ओस की बूंद को तूफान बना दिया। Wow. I want to hear it one more time so that because it's trying to spotlight it. I'll send you the whole version. This is like a 30-second thing that I wrote. So just I want to hear it again. Okay. अंधेरी राह पे अकेला चल रहा था, मुझे आवाज दी किसी, मेरे साथ कोई है, एहसास दिलाया किसी ने, मुश्किलों से निकाला मुझे जीना सिखाया, बिखरे मेरे दिल को जुड़ना सिखाया, अनजान इस दुनिया में कोई अपना मिल गया, पत्थर से मेरे दिल को मोम बनाकर उस बिखरे टुकड़े को फिर इंसान बना दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्स का जो अंधेरे में आकर रोशनी मेरी बन गई। मैं एहसानमंद हूँ उस शख्स का जिसने सहमी से उस ओस की बूंद को तूफान बनाया। Wow. I love the last line. It's so amazing. Thank you so much. Thank you, Aaron. Thank you, thank you, thank you. That was really beautiful. Everybody, wasn't that amazing? Mega, Aaron, अर्चित हमेशा म्यूट ही रहता है, बात किया कर यार। अरे दिल जीत लिया तूने भाई, दिल जीत लिया ना, पहले मैंने जीता फिर उसने जीता ना, है ना? मैम खुश हो गई, मैं उसमें रो गया तू चुप कर, तू अभी तक मैं तेरे पे खुश नहीं है, ठीक है? वो क्रेडिट उनको जा रहा है, बीच में मत पड़। मैम खुश है, ठीक है? मैम तो वैसे ही खुश रहती है बट आज ज्यादा खुश हूँ, डबल खुशी है, डबल टेबल। मैम वैसे मैंने भी पोयम लिख रखी है बट मैं आपको 2 दिन में भेजूंगा खत्म होने के बाद। क्या मैंने पोयम लिख रखी है आपके लिए, मैं आपको 2 दिन में भेजूंगा। ये से तड़क को डांस कर, अरे आई समझ टू डांस और समथिंग। No, this is for a song actually, जिसने भी बजाया। किसने बजाया? ये राज ने लिखी नहीं है, ठीक है? कुछ ये लिख के भेजेगा। अरे 2 दिन में करेगा ना, रुक जाना। सारे में म्यूजिक क्या था? मैं लिटरली वो मेरे को पिया तू
आज हमारी तेरी गलियां। This is a sad job. आई नो आज हमारा YouTube स्ट्रीम पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया. ओके सीरियसली फ्रॉम आई डोंट नो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर नॉट आंसर्ड. मुझे माफ करना बच्चे लोग. और मैम कैन आई सिंग वन मोर सॉन्ग? so that's okay, Sameer. Even if it's normal for people to have crushes. Damn, he is good. Yes, he's good. Ma'am, is sleep paralysis normal? No, if it happens very often, it's not, but it happens to most people. But it shows that your immense amount of stress, if it continues and it doesn't stop, then you need to take some help. It happens 1 to 2 times in a week, sometimes in panic. So let's contact ambidexter. Please contact me and let's see what exactly is bothering you. Because you know, what you're going through in your day-to-day life. Like if you saw RN is having trouble in sleep, right? So when you're not resolved it in your conscious state, when you are in your sleep state, your day events and things which really bother you, you're still trying to process in your sleep. Okay, and sometimes it's okay. All the time, if you're like having issues, we can try to work on that with certain breathing exercises, certain tips on before you sleep, how to handle your issues and write down. ताकि वो you pour it out on somewhere, so you're not constantly during your sleep hours. Okay, and it's very important to sleep well also, ना नहीं तो फिर problem होगा. I thought it would be chill stream. So chill stream भी तो है ना, ये chill नहीं तो क्या है अगर से गाना गा रहा है इंसान. Hello ma'am, you helped me a lot. Yeah, I took a hard step. My parents didn't want me to study further. It's stressful, but I'm enjoying it. I'm glad that I could help you. Thank you so much. I don't know, you stream gives stress. क्या ये एक तो तेरी English ठीक कर, ठीक है, मुझे नहीं समझ रहा मेरे what the cerebrate means. एक तो हिंदी में लिखो, जिनको English ठीक से नहीं आती, अगर से practice कर रहे हो कोई बात नहीं, but ये sentence should have been, what does the word cerebrate mean? Cerebrate means to introspect, to think, to look deeper within you. Avi Sutar, wow, ma'am, you remember my name and thank you for a lot. Thank you a lot for helping me with my problems. Shukriya, it's my pleasure, बच्चा. Yes, कोई कुछ कह रहा था? मैम मैंने देखा है बहुत लोग आपके चैनल का नाम सेलिब्रेट विद रचना पढ़ते हैं. I know. Best is this one, okay? So there was this person who wrote to me that, you know, I think you should check your channel name and something so important. How could you have misspelled? मैंने बोला, have you ever heard me speak? If you know that I have a decent command on the language. English अच्छी है. हाँ, sorry. In short, English अच्छी है आपकी. That's what I was like wondering, if you heard me speak, what are the chances that I've fucked up not just the name, I've misspelled it, but I've misspelled the logo, I've misspelled even the Gmail address, everything together I've misspelled. So thoda zyada ho gaya, but then I told the person and they took it pretty nicely. I said, before you write this to anyone, okay, ever, if you're ever correcting someone, make sure that you are on point. Don't write to someone and then say, oops, मैंने ये नहीं लिखना चाहिए था, अरे इस इंसान ने, पहले थोड़ा गूगल तो कर लेते करके वर्ड है कि नहीं. Logically, this is the way to handle something. Myth to machine, embracing the human heart. What's the topic? बता रहा हूँ. Actually, first time मैंने देखा था मुझे भी पता नहीं था, but I was just like, यार cerebellum and cerebrate, common basic logic है. Logic. Part of brain and cerebrate. Yeah, but not everybody has done maybe that amount of science also, not necessarily. मैं फेल हुआ था 12th में, कुछ साइंस नहीं किया है मैंने. अरे but सबका अपना अपना लेवल होता है ना, कुछ लोगों को नहीं सीखा होता है स्कूल कॉलेज में, which is fine. That's why you have Google. You don't even have to worry, right? Misfit actually. हाँ, so it's really nice to see so many people. Oh Jesus Christ, 10 कब बज गए यहाँ पे पता ही नहीं चला. तुम लोग के साथ ना कभी-कभी जब I have no clue where it. हाँ, yes please, कौन बोल रहे हैं? मुझे भूख लगी है. एक मिनट. हाँ, रचना मैम. हाँ, बोलिए बेटा. कौन बोल रहा है? मैम एक गाना और गा दूं. Oh, of course, go ahead. एक गाना और गा दूं. हाँ, गा ले. सबको तेरी आवाज वैसे ही अच्छी लग रही है और तुम अच्छे ना. So don't mind, but I'm going to snack in the middle. क्योंकि मुझे अच्छी लग रही है. तो तुम लोगों को पता नहीं क्या खाओ. कोई नहीं, आप खाते खाते सुनो. क्या सब अनहेल्दी खाना है मैम. How are you so fit? How? रचना मैम को बस पनीर मत खिला देना कोई. क्या बोला है?
बोला इतने फिट कैसे हो, आसपास पूरा जंक फूड पड़ा है। ये बच्चों का जंक फूड है, ये रूम मेरा नहीं है। मेरे रूम में तुम आओगे, तुमको सिर्फ फ्रूट्स नट्स ऐसी चीजें नजर आएंगी, हेल्दी चिक्की। तो आई एम लाइक वेरी पर्टिकुलर जूस, माय फ्रूट इज लाइक राइट नेक्स्ट टू मी, next to me. What's interesting, Aditya, his singing or me snacking? Which one? Acha, Sarin, go ahead. मैम वो मेरे बुक के टॉपिक की बात कर रहा है। अरे यार। Okay, ma'am, I'm going to send. मैम सुनो ना, Everybody, shh. सारिन गाना गा रहा है। मैम ये वाला गाना ना एक विलन मूवी है तेरी गली। सुनाई नहीं दे रहा, देख तेरे माइक का ना ये बहुत ही हेलो, सुनाई नहीं दे रहा? एको रहा एको। अभी नहीं आ रहा? नहीं, बहुत ऐसा लग रहा है मैं यहाँ हूँ और तू 20 कंट्री दूर है। वेट एक सेकंड। है ना? अब हाँ बहुत आती है। नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक था। अब ठीक है? बेटर बट स्टिल नॉट गुड इनफ। अभी ठीक है? ये भी लग गया है। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? अभी भी ठीक नहीं है? अब अभी ठीक है? ठीक है, सॉर्ट ऑफ, हाँ, नॉट बैड। ओके ओके। तू फ्लूट बजा रहा है क्या, कि तू डरा रहा है? नहीं, ये माइक बोल रहा है। ओ माय माइक ठीक कर रहा है। आज पता नहीं बट मजा आ रहा है। यही डूबे दिन में यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको तड़पाए गलियां तेरी गलियां। क्या हुआ? तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो दिल में तू होता है, ऐसे तू मेरे मेरे दिल की दुआएं तेरी गलियां तेरी गलियां, मुझको पावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां 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 गलियां, मुझको तड़पाए गलियां तेरी गलियां।
कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, ये चेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे रेशम से खो जाए, खो ना जाए हमसे, तेरी गलियां तेरी गलियां मुझको गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां मुझे तड़पे गलियां तेरी गलियां तेरी Awesome. Thank you, Saram. Thank you so much. Wow. That is all my pleasure, मैम. इसमें बस आवाज मतलब इसमें आपको ठीक से सुनने को मिल गया हो बस. नहीं नहीं, वहाँ क्योंकि थोड़ा तो वो हो जाता है ना. मुझे भी गाने का मन कर रहा है अभी. तुमने जिसने ईशान तुमने क्वेश्चन डायरेक्ट मैसेज किया, क्वेश्चन क्या है, क्या ठीक करना है, तुमने सीधा मुझे. हाँ, सॉरी. थैंक यू सो मच सारन. It was a wonderful evening. I had not expected it to go so beautifully, and I know some of y'all was like इस की stream question answer से गाने में कैसे. चलो, we don't have to take life so seriously, right? So thank you so much. मेरे को ना मैम एक चीज और बोलनी थी. हाँ, बोलिए. मेरे को एक चीज और बोलनी थी. मेरे को ये बोलना था कि मैं बहुत सारे आपसे मिलने के बाद भी ना, सबसे पहले तो मैं शताब भाई से मिला था, फिर उनके जरिए मैं आपसे मिला जब आपका वो देखा मैंने उनके साथ यूट्यूब पे. बट मैं इंसान की जिंदगी सफल हो जाती है उसकी, तो मैं टॉप में हूँ. क्या मैं सॉरी, चाहता हूँ कि आप हमेशा ब्रेक हुआ है. क्या बोला तुमने? श्वेताब के बाद कुछ सुनाई नहीं दिया. मैंने ये बोला. हाँ, आवाज आ रही है मेरी? अभी ठीक है. तुमने ये बोला श्वेताब के बाद थ्रू यू मेट मी मतलब ऑनलाइन. फिर जी. उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत मतलब पैसे वालों से भी मिला और ज्ञानियों से भी मिला जिनका एक तरफा ज्ञान था. बट मैंने एक चीज ये रियलाइज करी कि अगर बहुत सारे लोग ना हो तुम्हारी जिंदगी में, चुनिंदा कुछ लोग हों, 5-10 लोग भी हों, 5 लोग भी हों, बट वो मतलब आपके जैसे हो ना, तो जिंदगी पूरी सफल हो जाती है इंसान की. मैं बहुत दुखी रहता हूँ कि मैं अकेला हूँ, बट जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वो सब लोग, उन सब लोगों को दुखी होना चाहिए जिनके पास पूरी दुनिया है और आप जैसे लोग. Thank you so much. You're very kind. Thank you so much. Yeah, Thank yes, you. ma'am. This is so true. So true, ma'am. Mega, you're also very sweet. All of y'all with the love and affection that I get. Like अभी किसी ने stream में लिखा कि इतना low interaction मिलता है according to them. Bloody quality interaction, right? What would one ask for? You tell me any YouTuber who sits like this, who has so much. Yes, you get text, we love you, we say our name, but this what we do. How many can say that they do this? And I'm so blessed. I think this is what I want. Like he just said, you guys are my quality subscribers, followers, but like my heart, right? This is why I do it. Otherwise, what's the point of having millions of subscribers, but nobody knows you, you don't know anybody, there is no connection. Such a wonderful connection I have with you all. So no matter when and how long I continue, I hope it stays this pure and authentic.
थैंक यू वो सो तो मच। मैम पहले से तय है, मैं आपकी लेगेसी को आगे फॉलो करूंगा, मैं और ये हक किसी को लेने भी नहीं दूंगा। क्या 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 बोल रहे हो तुम? इस लेगेसी को मैं आगे फॉलो करूंगा आपके बाद। थैंक यू। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपके बात करूं, आपके साथ ही करूं, बट ये लाइफ है और ये हकीकत ही होती है कि हमारे बड़े जाते हैं फिर हम जाते हैं। बट मैं यही काम करना चाहता हूँ जिस तरीके से आपने मदद करी है, मैं और इससे अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ के बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ के, और मैं भी यही काम करना चाहता हूँ, बचाना चाहता हूँ लोगों को। और मैंने उसकी फ्रेंड जोन की दवाई भी निकाल लिया उस दिन जो मैं बता रहा था भाई नहीं, बता, मजाक नहीं, दवाई निकालना सीरियसली काम भाई। मेरा है यार, कुछ तो मेरे लिए छोड़ दो। He's into homeopathy। ये सबसे पहले तो मैं आर्यन को खिला तेरी दवाई, ठीक है? मैं परेशान हो गई इस बच्चे से। नहीं मैम, आप बता देना, जिसको चाहिए होगी ना मेरे को पर्सनली हाँ ब्रो, मैसेज कर देगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दवाई का, अच्छा 2-3 महीने में बिल्कुल क्लियर हो सुन जाएगा। सुन, तो हाँ 2-3 महीने लगेंगे ठीक होने को आर्यन, तो ट्राई कर। आर्यन विल बी योर गिनी पिग, ठीक है? हम ओके ब्रो हम डन। हम टेस्ट करेंगे और ट्रायल करेंगे कि आपकी दवाई कितनी अच्छी है। क्लिनिकल ट्रायल्स। मैम मैंने 10 लोगों पे अभी तक ट्राई किया है। ऐसा होता है आपके दिमाग में सोच आ रही है, इधर आपने मुंह में गोली डाली और उधर सोच गायब। ऐसा भी हो सकता है? ब्रो मैम मैं खुद ह्यूमन टेस्टिंग मैंने ये अपने लिए, मतलब अपने लिए करा था, बट मैंने फिर और लोगों को भी देखा तो सब में सेम ही रिजल्ट आ रहा है लगभग उस मेडिसिन ओके, सच में क्यों दवाई नहीं के try करनी है? मैं मेरे को कोई इधर भेजो, मैं भी, आई मीन नॉट दैट आई मीन लव और एनीथिंग, बट मेरे को कोशिश ऐसे तुम, तो इट हैज टू बी समवन यू आर अट्रैक्टेड टू, कि आई कैन थिंक ऑफ एनीबॉडी एंड आई कैन फॉरगेट। मैम किसी को भी अभी मैं इतनी आगे तो नहीं बढ़ा हूँ उसमें, कम से कम मेरे को 100 एक्सपेरिमेंट तो करने पड़ेंगे ना स्टार्टिंग में। अभी मैंने 10 करे हैं अच्छा ठीक है आर्यन पे कानपुर में पहले ही, तो यहाँ पे मेरे। आर्यन तुम लोग थोड़ा बात करो, मैं, मेरा फोन गर्म हो गया है। ओके आयरोनिकली आई डोंट थिंक ऑफ एनीवन दीस डेज। मैं दूर हूँ एकदम इस झमेले से। डोंट थिंक ऑफ एनीवन, झूठा। मैम पता है इसके अंदर एक बात बताऊं आपको, लड़के बताते नहीं है। पता है मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ये लगा कि मुझे कोई पेशेंट नहीं मिलेगा। अब मैं जिस लड़के से मिलता हूँ ना और थोड़ी सी बात करता हूँ तो अंदर से उसके निकलवा लेता हूँ कि हाँ भाई टूटा हुआ हूँ, एक बार तो टूटा हुआ हूँ। ऑब्वियसली ब्रो, मैम लिटरली आई टेल यू, अभी मेरे शोज वगैरह हो रहे हैं ना, लास्ट हमारा स्टैंड अप का तुम शो बात था। करो, आई एम कमिंग बैक इन 2 मिनट्स। हाँ कंटिन्यू, तुम लोग एक आई दूसरे वाज से बात करो। आई डिड टिकट चेकिंग एंड एवरीथिंग। भाई इतनी लड़कियां आ रही है वहां पे, सब मेरे से बात करके जा रही है, सब ये हो रहा है, एक की तरफ भी मुड़ के नहीं देखा मैंने। नहीं ये तो बहुत अच्छा है, अगर आप किसी पर्पज में हो और कोई पर्पज आप, यार ऑब्वियस सी बात है ना, कोई लाइफ में उससे बड़ा पर्पज मिल जाएगा तो ये सारी चीजें फिर सेकंड हो जाती है ना, वो होना जरूरी है। ब्रो अब पास नहीं पता मैं आपको मेरा। मैं मैम यार देखो, मैं ना इस पे बात नहीं कर हेलो। सकता, मैं मैं आके उस मुझे हिसाब से नहीं बोल डांटने रहा। लगेंगे तो ज्ञानी बन जाता है। भाई जो अलग ऑब्सेशन था ना, मैंने पर्पस वर्पस सब छोड़ दिया था। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने देखा है यार, मतलब आपके लिए नहीं बट मैं करना चाहता हूँ यार ये, क्योंकि बंदे ना इसके अंदर पड़ के बहुत वक्त खराब कर लेते हैं यार अपना। I think for achieving a similar result that your medicine is, giving, मैं जी स्मोक करता था for the same thing कि सोचना बंद हो जाए, जी and which obviously is bad, but मेरा जी ऐसा था that ठीक है यार कोई मीटिंग वगैरह, so I used to work a lot, I used to work 12 jobs, तो कुछ मीटिंग है कुछ काम है तब लाइक ठीक है फटाफट स्मोक कर लेते हैं, कुछ वक्त के लिए दिमाग से बात निकल जाएगी, काम हो जाएगा, and फिर addiction and it would actually help out a lot. एक्चुअली बात क्या है, मैं होम्योपैथी से बिलोंग करता हूँ ना, तो होम्योपैथी 3 चीजों को ज्यादा मानती है, ये बॉडी माइंड एंड सोल। तो ये जो हमारी चोट लगती है ना, हम लोगों को ये लगता है कि हमारी माइंड पे लगी है, बट वो हमारे सोल पे लगती है। इसके लिए थोड़ा आध्यात्मिक तौर पे थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है, डीप लेवल पे। मैं साइकोलॉजी में था तो मेरे सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर मेरे को यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे गुरु, एक ही गुरु मिले, ज्यादा तो नहीं, श्वेता भाई भी उन्हें बहुत मानते हैं, उन्होंने भी अपनी एक वीडियो में उनका जिक्र किया था, बाकी सबको तो नहीं जानता। तो आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत कुछ समझना पड़ता है यार। वो चोट जो है ना, वो लगता है लोगों को कि हमारे माइंड के अंदर है, बट वो आत्मा के अंदर चोट होती है, जो जिसको भुला नहीं पाते, वो वहां से ठीक होनी चाहिए। अब वो वहां से जब ठीक होगी जब हमें खुद पता होगा हमारे आत्मा का मोल क्या है, हमारी चेतना का स्तर कितना ऊंचा है। अभी मैडम आ गई ना, ये बातें करते हुए यूं कहेंगी इसका ज्ञान शुरू हो गया बाबा का। पिछली बार तो मेरी डांट लग गई थी, गंदी वाली। मैं No, पिटाई actually, करते वक्त करता हूँ uh, मैम के hello. फॉलोअर।
Salim, whatever you are talking is like very few people realize this. The True, kind man. of depth you're talking about. We youth are simply reluctant to understand that how much important it is. Whatever you are understanding and whatever the perspective you are putting in. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को ना फॉलो कर लेना, मैं भी फॉलो कर लूंगा इंस्टा पे। मुझे ऐसे लोग चाहिए होता है थोड़ा, जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरी बातें थोड़ी सही लग रही है ना तो मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मैं आपको लिंक दूंगा। और वैसे मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ, बट हम आगे भी टच में रहेंगे। आचार्य प्रशांत करके हैं एक, आई होप आप में से कोई उन्हें जानता होगा। Yes, yes, जानती हूँ। वो जो बंदे, मतलब मैंने बहुत सारे और गुरुओं की भी बात सुनी, अद्वैत लोग जो अद्वैत टॉपिक पे जो बात करते हैं, बट उनका जो बात करने का तरीका था ना, ऐसा समझो कि श्वेताब भाई के पापा हैं वो। मतलब पुराने जमाने के हैं, तो वो थोड़ा धर्म से जुड़े हुए हैं, एंड वो धार्मिक स्तर पे भी बताते हैं, चेतना के स्तर पे भी बताते हैं, आध्यात्मिक बहुत। मतलब मेरे को मेरी जिंदगी वहां से बदल गई बिल्कुल। वरना मैं छोटे छोटे, मेरी लाइफ के छोटे छोटे पर्पस थे। लाइफ का जब एक बड़ा पर्पस बन जाता है ना, तो छोटी छोटी चीजें बॉदर करनी बंद कर देती हैं उसके बाद। अब भी मेरे साथ होता है कि फ्रेंड जोन में मैं पड़ जाता हूँ कभी किसी के साथ। मतलब ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में कोई लड़की आई है, मैंने हल्का सा इंटरेस्ट दिखाया, वो मतलब परछाई वाला सीन होता है, तुम परछाई तुम्हारे आगे आगे भागती है, वैसे तुम्हारे पीछे रहेगी, वो हाथ में कभी नहीं आती। तुम सूरज की तरफ भागना शुरू करो, सच्चाई की तरफ भागना शुरू करो, तो वो तुम्हारा पीछा करेगी। तुम सूरज अपनी, मतलब अपनी श्रद्धा को छोड़ दो। तो इतना बड़ा तुम किसी चीज के पीछे जा रहे थे, तुम्हारा इतना बड़ा मकसद था, तुम वापस मुड़े कि मैं तेरे को पकड़ लूंगा, वो मोह और माया है, तो वो तुमसे दूर भागेगी। फिर उसको सिर्फ लुक्का छुपी खेलनी है। इस वजह से जिंदगी का जो मकसद है ना, वो बहुत बड़ा होना चाहिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम करोड़ों लोगों को मेडिसिन दूं एक साथ। मतलब अभी मैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसके अंदर, हो सकता है बहुत साल लगे मुझे, बट मैं ऐसे ही करूंगा। मैं तो, अब मेरे को छोटी चीजें बॉदर नहीं करती बहुत। होगा एक दिन, don't worry, it'll be good. And as long as, well, you're working for the good of the people, so that's always something that, gonna be supported. थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों की दुआएं चाहिए बस, और कुछ नहीं है। Yes, always. तो कब स्टार्ट कर रहे हो आर्यन तुम? मेरा म्यूट पे तो नहीं है? हाँ, कब कर रहे हो दवाई स्टार्ट? मेरे को बता देना एंड टेल मी इफ इट वर्क्स, देन ऑब्वियसली आई विल प्रमोट इट। ठीक है? Yes, ma'am. और आर्यन, ज्यादा बकवास मत कर, ठीक है? तेरे को मैं तो मैंने कह रहा था, और चीज के मैं तो लिए लगाई थी, हाँ? नहीं, मैं तो कह रहा था, मैं तो हाँ, कह रहा था, मैं तो कह रहा था। अब मैं बोलूंगी ना किस बात के लिए डांट लगाई थी, वो अलग नहीं, है ना? वो मेरी बहुत गंदी बात थी। हाँ, You will be मैंने इस बात के लिए डांट नहीं लगाई थी कि तू किसी स्पिरिचुअल चीजों की बात कर रहे। मैं खुद स्पिरिचुअल हूँ, ठीक है? उस बात पे नहीं डांट लगी थी। तुमको याद नहीं, मेरे को हमारा कॉन्टेक्स्ट बराबर याद है, मैंने तुमको डांट लगाई थी, ठीक है? Also, ma'am, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है अभी, because I'll tell you, मैं इतना दूर रह रहा हूँ ना, I am not thinking about anybody. वैष्णवी तो छोड़ ही दो, और भी किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। Like, no crushes, nothing. Like, मेरा लास्ट स्टैंड अप का शो था, मैंने टिकट चेकिंग की था। Obviously, I am one of the organizers as well. There were so many pretty girls. वो मेरे सामने आ रहे, नाम पूछ रहे। I'm just like, okay, मैम टिकट please enjoy the show। खत्म, मुड़ के भी नहीं देखा, किसी से बात भी नहीं की। I mean, उस तरीके से कोई ख्याल भी नहीं आया दिमाग में। I had a lot of interaction. Obviously, it was my own show too. तो शो के बाद भी many people came, took my IG and all, talked to me. I did not even think about that stuff. I was like totally fine. I'm just like, study, play games, enjoy. Okay. तो अभी किसी ने लिखा है कि मैम एक ओल्ड गाना सुना दो। अरे भैया, इसने इतना अच्छा गाना गाया, मैं अगर से ऐसा गाना वाना गाने लग जाऊं, मेरा चैनल जो थोड़ा बहुत भी चल रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मैम। मैम वो वाला गाना गाओ, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार में, प्लीज। इतना डिफिकल्ट गाना ऐसा भी गाने ने थोड़ा अच्छा वहाँ ऐसा नहीं करके, जो ऐसा कोई गाना है जिसमें गाना नहीं पड़ता पर सिर्फ उसको रिसाइट करना पड़ता है, वो मैं कर सकती हूँ। बट गाने को मैं मेरी तो जब वो गाओ। मैं क्यों गाऊं? वो तो मेरे लिए कोई गाएगा ना। What is wrong with you? Anyway, हम गाना वाना नहीं गाते, हम क्या ब्रेथलेस मेगा और भी तुम, like he's not, he gave it here, now you give it here.
So the thing is, sorry children, but तुम लोगों को इसी के साथ झेलना पड़ेगा कि मैं गाना वाना गाती नहीं. हाँ मैं डांस करती हूँ. तो एक दिन अगर से हम लोग पबिंग क्लबिंग जाएंगे तो आप मेरा डांस देख सकोगे. तो मैं आई मीन मैं भी ओके गाता हूँ, आप भी गाओ फिर. क्या मैं भी क्या गाता हूँ, आप गाओ, मैं भी गाऊंगा फिर. नहीं एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, अगर से हम इधर लाइक 10 लोग होते और 10 लोगों के बीच में गाना पड़े अलग अलग जो हम गाएंगे ना, तू अपने स्क्रीन से मैं अपने स्क्रीन से, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. सो प्लीज लेट्स नॉट. ईशान एक मिनट, ईशान जो तुमने क्वेश्चन पूछी है, 1 आई एम नॉट अ सेक्स थेरेपिस्ट, 2 आई कैन ओनली गिव यू रिसोर्सेज, 3 इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, 4 कॉन्टेक्ट मी ऑन डीएम ऑन इंस्टा इफ यू हैव issues regarding anything regarding porn addiction, mobile addiction, masturbation addiction. This resources I provide, but I do not generally take such cases. I only email you the resources because this is not my area of expertise. So we are out. वो कौन सा वाला? Shark Tank. Next time out. Okay. So DM me, I'll help you with it. ठीक है? मैम मेरे को एक बात और बोलनी थी. बोलिए. उसके साथ ना एक कॉम्प्लीमेंट्री दवाई भी है, बता सकता हूँ किस चीज के लिए है? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री ओपन हो दवाई. जाए. मतलब ऐसा होता है ना मैम, जैसे हम किसी के प्यार में पड़े, अब वो हमें बाद में मिला नहीं. मैंने ज्यादातर मतलब लड़कों के साथ ये देखा, तो फैंटेसी में पड़ जाते हैं. श्वेता भाई से काफी कुछ सीखने के लिए, तो एक दवाई ऐसी भी है जो फैंटेसी से भी निकाल देती है बाहर. मैं निकल गया, मतलब मैं पर्सनली निकल गया उन दोनों दवाइयों की मदद से. वो चीज अब मेरे को बॉदर नहीं करती, मेरे को गुस्सा नहीं आता, मैं कंपैरिजन नहीं करता अब लोगों से अपना. ऐसा नहीं है कि मैं अब फ्रेंड जोन में उसके बाद पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा हूँ, बट मैं बहुत जल्दी निकल गया. बट उसके पीछे मैम एक रीजन और है. उसके पीछे सिर्फ दवाई ये नहीं है, उसके पीछे ये है कि मैंने आपकी वीडियोस बहुत देखी हैं, श्वेता भाई की वीडियोस बहुत देखी हैं, और आचार्य प्रशांत, तीनों की मिला के मैंने बहुत देखा है. तो मेरे को उस चीज को ना सुनने से प्यार हो गया. अब मैं खाली बैठा रहता हूँ, सुबह में 9 से 12 तक, 1 तक मैं पढ़ता हूँ 4 घंटे, तो साइड में ना एक वीडियो चल जाती है, आप तीनों में से किसी की भी, लंबी वाली, वो सुनता रहता हूँ और काम करता रहता हूँ. ये इस वजह से मैं निकला था. हाँ मेगा, तुमको कुछ कहना And है? ma'am, your how to think session with Shweta was like so wonderful, ma'am. वैसा Yeah. वाला session फिर how It to was- think session, ma'am. Hello. I remember it was like wonderful, but unfortunately I have not been in touch with Shweta much in the last, like say, few months. We had almost decided to do a podcast. Then I told him one of the sessions ki maybe we can do it. And then I think you people know, right? I had a family emergency. Sorry, Ma'am, तेरा वो भी पूरा जो signal आज playlist है बहुत ना, गंदा है. तेरा भी सिग्नल में. हाँ बोल, अभी बोल, सुनाई. हाँ अभी audible है ना? हाँ. वो जो पूरा प्लेलिस्ट है ना मैम, उसमें इतना कुछ सीखने के लिए इतने अच्छे पर्सपेक्टिव डाले उसमें आपने. कि मीन्स की पूरा हमारा जो पूरा एजुकेशन है अभी तक का, और उसको देखो. आजकल श्वेता नहीं करते क्या लाइव सेशंस? नहीं शायद नहीं करते. नहीं शायद नहीं कर रहे. I know that he was trying to do something different, but I'm not sure where and what. Anyway, I guess everything has to finally come to an end. So is this session. So on a beautiful. I'm feeling really uplifted now, ma'am. क्या चीज? Feeling really uplifted, ma'am. After that result part which came out in the morning, I was feeling down since morning, ma'am. But अभी इतना अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा this whole environment is so charged and so happy, ma'am. Yeah, even I was a bit exhausted. I can't say very exhausted, but I was like, करूँ नहीं करूँ स्ट्रीम. फिर मैंने impromptu कल शाम को जो समय एक बार मैंने अनाउंस कर दिया ना, तो फिर no matter how tired I executed. So I'm glad that I did that. और पता है मेरा काफी टाइम के बाद भी हुआ है ना मैम, बहुत टाइम के बाद. एक महीना हो गया ना, क्योंकि I remember कि मैंने एक सेशन बीच में किया था. And who are you? Yeah, not today, but not today. I'm tired. Yeah. So now that I have not worked for 3 weeks, मेरे DMs को देख के वो ना, जब ऐसा लगता है कि oh my God कितना काम है, वो वाली फीलिंग आ रही है. लाइक आज मैंने इतने लोगों को रिप्लाई किया, कुछ सेशंस लिए, पूरा वीक का अपॉइंटमेंट्स फुल हो गया. And some people I kind of forgot to give the appointment.
So then I'll have to try to adjust maybe more appointments in a day. But it's okay. I love what I do. So some days I get more tired. I'm most likely going to Turkey again. Not again, I'm going to Turkey on 21st. There's a shadi. Breathless song सुनाओ. मेगा तू गा ले. अच्छा तुम्हें आता है सारे? I can. Yeah, Sarin can sing. No, ma'am. I don't know. Breathless is touching that song. It takes a lot of Yeah, guts. Sarin, Chand Balia instead. Chand Balia is a beautiful song, no, ma'am. बहुत अच्छे से. ए चांद बालिया गा. बेचारी कब से बोल रही चांद बालिया गा. उसका बॉयफ्रेंड ने कहा तू तो गा ले. मैम कसम से मुझे चांद बालिया का ना मैंने कभी नाम भी नहीं सुना है, आज पहली बार सुना है. क्या बात कर रहे हैं? तेरी चांद बालिया, तेरे होठों पे गालियां समथिंग. आपको पता है ना मैं लड़कियों से बहुत दूर निकल चुका हूँ, तो इस वजह से ना मैं इस टाइप के गाने भी नहीं सुनता. जो तूने अभी गाया था वो तो भी लड़कियों को अच्छा लगता है. जो तूने तीनों गाने सुने मेरे को सब तीनों पता थे. अरे वो तो बहुत पुराने गाने हैं ना. अब मैं रोमांटिक सॉन्ग्स मतलब मैं अब मैं गाने अच्छा बाबा ब्रेथलेस गा ले यार. दर्शन रावल के गाने मैं ब्रेथलेस पूरा सुना था, बट पूरा वो ना उस पे यूट्यूब पे उसका म्यूजिक पड़ा हुआ नहीं. वो 2 पार्ट में एक्चुअली ब्रेथलेस. ओके 2 पार्ट. मैं फर्स्ट पार्ट सुना देता हूँ. ब्रेथलेस के 2 पार्ट है मैम. अच्छा उसकी पूरी कहानी तो दूसरे पार्ट में खत्म होती है ना. हाँ गाने. क्यूट फिल्टर है. एक सेकंड मैं लगा रहा हूँ. 30 कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में हुई तो फिर यही वाला ना. ये तू रिसाइट कर रहा है कि गाना गा रहा है? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ. एक ही तो ब्रेथलेस सॉन्ग है शंकर महादेवन का. वो तो उसके लाइक उसको टच करना इज ब्लास्फेमी, बट लेट्स ट्राई. थोड़ा सांस ले लेना ठीक से. मैं तुझे हेल्प कर रही. इंस्टा पीपल आई एम सॉरी आई हैड टू गो ऑफ बिकॉज मेरा फोन गर्म हो गया था. एंड गर्म जब हो गया तो इमरजेंसी वाला ये आया था कि switch off your phone, it's overheated. God knows how did that happen. So I have like 49% left. In case I it goes off again, please join on Zoom and YouTube. हम अभी तक यहीं बैठे हैं. कितने घंटे हो गए? I've kind of lost track. 2 घंटे से 2 घंटे हुए, 2.5 घंटे हुए. हाँ 8 o'clock my time. Okay, not bad. हाँ स्टार्ट कर. सॉरी सारे माँ भी ब्रेथलेस गाना गाने वाले. आज पता नहीं हमने स्ट्रीम को थोड़ा दूसरा स्ट्रीम ले लिया है, मोड लिया है. गाइए सारे. ओके मैं स्टार्ट करता हूँ. मेरी आवाज तो आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है. ओके जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया में तो फिर तो भी बता दे खुशबू की आंधी है.
Wow. थोड़ा वो म्यूजिक के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, अदरवाइज यू कैन रियली सिंग वेल, you know. It's really Sarim also left and Sarim came back also. Sarim Ali, very well, sound very well. But this damn music thing that you have, no Sarim, fix that, okay? The problem is when you come on Zoom, it clashes with the Zoom and all. And who's Vaishnavi wrote, love you ma'am, love you beta, God bless you. Thank you for coming and all the people who are, yes, किसी ने पूछा इतना लेट, अरे लेट तो हम इधर 8 बजे, सॉरी 9:30 बजे इंडिया से बैठे हुए हैं. So it started off like my regular stream, then it turned into my birthday stream where they are reciting poetry and wishes and songs. So आज 6 घंटा पागल है मैं, तुम अरे भगवान, मैं तो ऑलरेडी इतनी थकी हुई हूँ. 6 घंटा तो इम्पॉसिबल, मुश्किल से आज हमारे कितने 2.5 घंटे हुए हैं. 6 घंटा रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सकते. आई थिंक वो दिन एक तो लेट मी लाइक बिकम मोर फ्रीक्वेंट एट द स्ट्रीम, so we have more questions, we have more interaction. Thank you Pointless Giraffe. क्या नाम रखा है? Pointless Giraffe. Okay, thank you Pointless Giraffe. Sani, how are you? Long time no see. Big guy, hi. Long time. Rashid, and yeah, someone sang. Sarim sang Breathless. He's like such a good singer. And अरे मैम, मुझे पता ही नहीं लगा वो बंद कब हो गया. वो स्पीकर के पास रखा था दूसरा फोन, मुझे पता ही नहीं लगा वो बंद कब हो गया. स्पीकर के पास रखा हुआ था फोन, मैं दूसरे फोन में देख के गा रहा था. अच्छा, नहीं प्रॉब्लम क्या है Sarim, you watch the stream all over again, so you will understand what is going wrong. You're not understanding what happens. So when you are on Zoom and there is music playing, so your mic is trying to send your voice and send the music, right? That's why it was a huge music कभी fade हो रहा है, कभी आपका आवाज आ रहा है. Otherwise you sang it so beautifully. If you can practice without music, I think एक true singer की ये तब दिखाई देती है जब वो बिना म्यूजिक के ये सब गा सकता है. आप 1 सेकंड रुको, यहीं से एक मिनट रुक जाओ, है ना? ठीक है, ओके. कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं, बहकी हुई सी अब सारी हवाएं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे है, धड़क रहा है सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे जब कोई आया था नजरों. मैम आज मेरे से गाया नहीं जा रहा, सॉरी. नहीं, क्योंकि तूने अभी इतना गाया और फिर से तुमने इतना गाया. I mean amazing. I was just going to say you already sang so much, but you actually can sing it so well. I'm quite surprised. नहीं Aryan, मेगा? मैं पहली लाइन में लड़खड़ा गया. I'm not even kidding. I tried to sing it. मैं पहली लाइन में लड़खड़ा गया. I don't know how you did it, bro. That's like. देखो अभी कितना अच्छा साउंड कर रहा था बिना म्यूजिक के. तुम फर्स्ट टाइम ही ऐसा करते, तुमको सेकंड टाइम बेटर होता. बट नेक्स्ट टाइम डोंट सिंग विद म्यूजिक ऑन Zoom. If your life is different, वो mic नहीं. Wonderful voice he has. Wonderful voice, right? I always told him. The modulation and everything, like जो सुर पकड़ना, that is. और ये गाने का सुर पकड़ना सबके बस की बात नहीं है. So सारे hats off to you. Really well done. थैंक यू मैम. मैं इसको किसी जगह गा के ना पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे. मैम ये सारे लोग मेरे को आपकी आईडी में मिल जाएंगे इंस्टाग्राम में? मैं सबको फॉलो नहीं करती, पर ये लोग मुझे फॉलो करते हैं. सारे को तुम्हारा नाम कॉमन नहीं है, सारे मिल जाएंगे. सारे सॉन्गस्टर, राइट? सारे सॉन्गस्टर है तुम्हारा आईडी. जी. तो गाइस
जिनको इसका मेडिसिन ट्राई करना है, गाना सुनना है और उनसे स्पिरिचुअल बातें करनी है, डू फॉलो. And who's, yeah, exactly, somebody just wrote Shankar Mahadevan right there. Yes, we are lucky to hear his song, and you should have heard his first song. Because ये म्यूजिक की वजह से मैम फॉलो करो, फॉलो फिर. हाँ, तो मैम को ऑलरेडी उसने फॉलो किया है. नहीं, आप तो हमें करो, आप नहीं करते तो. मैं एक तो मेरे सिर्फ टीम को फॉलो करती हूँ पहले मेरे तो. को नहीं करते. आई हाँ, एम इन योर टीम. तूने कभी टीम में कुछ किया नहीं है भाई साहब. I मैंने did. भाई मत खोल के देखो, उसमें है मेरी एडिटेड चीजें. डिस्कॉर्ड में चला गया, वहां कुछ नहीं किया. मेरा वीडियो एडिटिंग करने वाला वहां नहीं चला गया. तो है यू आर मेरे सो बिजी है. I have edited stuff. See on the YouTube. I'll send you the links. तो एनीवे, सो अभी मैंने बहुत अर्चित फिर आ गया. अर्चित तू काहे आता है, तू बोलता भी नहीं है. मैं अर्चित से खफा हूँ. सारे तुझे वो गाना पता है क्या? मैं किसी बात से खफा हूँ, खफा हूँ, खफा हूँ. वो अमिताभ. उर्दू वर्ड्स मत बोलो मैम, पोएट्री ट्रिगर हो जाती है वापस उसकी. मैं वो फेज में चला अरे जाता हूँ. इसको छोड़ बाबा, मेरे बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम से एंड ऑफ द स्ट्रीम इसको उस लड़की के बारे में कहीं नहीं, ना वो कहीं नहीं, उसका नाम मेरी डाल देता पोएट्री है. ट्रिगर हो जाती है पूरी उर्दू से. यार काश मुझे भी ऐसा कोई प्यार करता. ओके, लड़की is so lucky she has you, but she doesn't value you. So please love somebody else, but not to this divangi wala extent. No, it's not good. Okay, it's not good for your health. हाँ, so मैं करता हूँ मैम आपको इतना प्यार रखती हूँ. So अर्चित, मैं अभी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी कि अर्चित कुछ बोलते ही नहीं है. एक्चुअली बोलना आता है आपको. तो why are you quiet? May I ask? Why do you always just watch me talk? You can participate. You know that, right? इतना प्यार किसी से पे पहली बार आया है. ओके, आज के लिए प्यार की बातें और मैम अर्चित. इस लाइफ के लिए काफी हो गई मेरे लिए तो. मुझे लगता है अर्चित तू घर पे है और तू बात नहीं कर सकता है, तू सिर्फ सुन सकता है, ऐसे प्रिटेंड कर रहा है. तेरे को आज बात कर रहा. सॉरी, आई एम जस्ट पुलिंग अ लेग. ओके, वी आर इन लाइक इन अ गुड मूड. ओके, अच्छा, लेट्स सी. क्या मेरे हियरिंग पे किसी ने कुछ बोला क्या? मेरे को अभी कुछ नजर आया. क्या लिखा? हेलो मैम, मैं फिर आ गया. बालाजी, आई एम गुड टू सी यू. और क्या? आई क्राइड है. Anmol Singh, ma'am, my ex-GF called me after 3 months and wanted to inquire how I was doing. I cried to her when she left, and she was very cool at the time, but I kept her restrained this time. Very good, very proud of you. See, most of the time जब तुमको कोई याद करता ना इतने महीनों के बाद, थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाओ कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में chaos करने फिर से क्यों आया है, और अचानक उनको तुम्हारी याद काहे आ रही है, इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ा है, तब प्यार कहाँ गया था. तो ऑलवेज बी केयरफुल. तो फ्रेश फ्रेंच फ्राइज और वो याद है एक मीम था. जस्ट बी केयरफुल. ओके, if of course if they have understood your value and they want to come back, that's very different. Most of the time उनको ध्यान नहीं मिलता है तो they come here. कोई कुछ कह रहा है क्या? सॉरी. सारे में अभी तक अपना खुद का गाना सुन रहे लगता है. कैन हियर हिम, आई म्यूटेड हिम. अच्छा, हाय बिग गाय, कैसे हो? लॉन्ग टाइम नो सी. तुम 4 बार तो स्ट्रीम में आए हो. कुछ क्वेश्चन लिखो, कुछ बताओ, बोलो. वर्ल्ड ब्यूटीफुल. ओके, वर्ल्ड ब्यूटीफुल. हाय निश्चय, कैसे हो? हाय डीजे. सारे उधर का है ज्वाइन किया तूने? अक्षत, गुड टू सी यू. एंड माय डॉटर इज ऑन हियर, आई हैव नो क्लू. मोहित, हाय. ओके, oh my god, what is this? Was away for a few minutes to get interesting fact. मुझे ना मैम थोड़ा. One minute. Arjun has written something. Okay, so he's written was away for a few minutes to gather interesting facts about this day. So June 2nd, 1971 was a Wednesday, correct? And the next time you can reuse your old 1971 calendar will be in 2027. Okay, that's interesting. Okay, both calendars will be exactly the same. Interesting. There have been 19,003 days from the day you were born up to today. Man, I've lived so much. Seems so less.
The 19,000 is not too much, right? Anyway, they were precisely 644. I love what you have written. Can you make a post? I want to post it. They were precisely 644 full moon after you were born up to this day. The next full moon, 645, that you can see will be on July 3rd, 2023. The ruling planet is Mercury, the planet of communication. No wonder my communication is so good. Lesson that your last past life brought to present. The world is full of ill and lonely people. You should help those who are less fortunate than you are. Oh, that was written somewhere. That's why I'm doing that. Although I don't believe in past life, but this is sounding interesting. You would turn. Can you somebody read that? How much is that? 4, 5, 6, 7, 8. How much? Aryan, how much is that the number? 4,56,789 hours on 12th of July 2023, 3 hours before the hour you were born. Oh my God. Okay, you would turn 4,56,789 hours on 12th July 2023, 3 hours prior to the hour that you were born. Interesting. You were, yeah? 1 minute. भाई, You were a female in your last earthly incarnation. I would suggest a goddess or something, but chalo theek hai, we'll deal with this. You were born somewhere around the territory of central England, approximately 1325. Your profession was a jeweler and watchmaker. So I like jewelry. ये एस्ट्रोलॉजी में चला गया, पर मेरे को ज्वेलरी अच्छी लगती है, मेरे को वॉचेस ज्यादा अच्छे नहीं लगते. Maybe that's why I'm so punctual. Fuck it, man. You know how punctual I get so irritated when people are not punctual and not prompt. Maybe because I was a watchmaker. Imagine. Okay. Aryan, what are you writing? So Aryan has written to him, ये किस level की stalking है, past level की. But that's so fucking interesting. Thank you, Archit. That's one of the most unique birthday gifts I have got. I have got today poetry, songs, and something about my life. I mean, past life. We don't know whether it's true or not, but this has been like really fascinating. And this is the 4,56,789 hours I have calculated for you. Oh, so sweet. Thank you. Please make a post, Archit. I want to post this on Insta, and you are sending me the. Sarim is going to sing the song again and post it on this thing and tag me. Aryan is going to say the same shairi or write the shairi or something. He's going to tag me. Where is apna Raj? Raj is also going to write something in 2 days and write to me. Yay! What a birthday! Who could ask more? I mean, this is like really, really amazing. Thank you, Archit. That was really sweet. Really, really sweet. I was very fascinated. And see how we I forgot that psychology term. How we kind of that a confirmation bias hota na, like we attach it just because I'm prompt, so I must have been a watchmaker just because jewelry मैं सारे time jewelry collect करते रहती हूँ, so it could see how we kind of have that thing already in mind. So it's really beautiful. मुझे भूख लगी थी. By the way, किसने ये खाया है कभी लाइफ में? This is a Filipino dessert or whatever snack, meetha. It's called polvoron. This one is a cashew one. So generally they are in these small packets. They're like powdered, crushed. Like very interesting. They make Oreo flavor, almond flavor. This is the best. The one I really like is this one. मैंने नहीं खाना चाहिए मीठा रात को. उन लोगों ने मेरी कैलोरीज बर्न करा दी है बैठे बैठे 3 घंटे में, तो मुझे भूख लगी है. रस्क ने ये पाउडर्ड कैशू है, रस्क नहीं. मैं राहुल मैम अभी 12:15 हो रहा है. मैं अपनी स्ट्रीम के बाद जाके पास्ता बनाने, क्या प्रॉपर पास्ता प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच. हाय निरंजन, तू पास्ता बना रहा है? ओके कूल. बनाने वाला हूँ जानने में. Who is this person writing it? What are they writing? Oh, who's writing? Okay, so Archit wrote this for me. Who was asking this on YouTube. So that was his gift to me for my birthday, and it was very interesting. Okay. And then the person who said my ex just called me after 3 months. So she left me by ghosting. It was really, that's really bad. 3 years later, ghosting. Come on, people, have some shame. Have some respect for that person. Don't just
ये म्यूट करना तेरा इसका म्यूट भी नहीं कर सकते सारे तुम्हारा म्यूट नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन। ये क्या नया वाला तुमने वो ये क्या है कि आई एम कैन नॉट इवन म्यूट यू। ओके ही लेफ्ट। host and see. So that's so sad, and I hope you have not like if somebody's ghosted you and left. What is wrong with you people? 3 years you don't have that kindness for that human being unless the relationship was like really really bad and something else happened and you didn't tell me. That would be different. Okay. And should I call her or keep minding my own business? When she called you, didn't you find out why she called you? Is she feeling guilty? Maybe she's just feeling guilty now that you told me that maybe that person is called because they're feeling little pangs of guilt too, and they want to feel better about. Sometimes people do that, just to elevate their own guilt. They'll call you and then Or maybe like like I think एक बार बात करके just like hear her. Maybe she just wants to apologize once. I guess even that's okay, na? If someone wants to apologize or something like that. So just hear her out once and then decide what to do. I think just a chance to speak. no guilt, no guilt. There's no guilt there. So if, when you the first call, didn't you ask her? Only she said कि तुम कैसे हो पूछने के लिए. 3 महीने 3 साल नहीं 3 महीने. अगर से तुम्हें लगता है देखो this is like opening a can of worms. Okay, trying to call her back again or to so be ready for it. You don't know how the relationship the conversation is going to go. If you're ready for it and you want to, if it's keeping you this thing engrossed, अरे करूँ नहीं करूँ, अरे कर लेता हूँ, अरे क्या बोलने वाली है. So you can. Or she went to Gurgaon for a job and then broke up. I have a feeling we were in touch. You and I have spoken on this, is it? I can't remember. Anyway, everybody, if you feel like contacting her and you think that it will help you feel better, yes, go ahead. But if you think, hey, yaar, I'm over it, I don't want to fucking know what the hell she's thinking, why she called me up, it's best that I don't touch that area of my life again and I don't revisit the past. The choice will be yours. Okay, so be careful. Ghosting means जब कोई आपको आपके लाइफ से चला जाता है बिना एक्सप्लेनेशन बिना कुछ भी. ठीक है. सारिम तुम्हारा ही है क्या ये? तुम्हारा पता नहीं. अच्छा मैं म्यूट कर. मेगा तुम्हारा भी बहुत आवाज कर रहा है. Okay, whoever wants to say something, I'm muting. Say. Ma'am, can I say something? Yes, please go ahead. तो मेरे दिल में है मैम वो बात, वो सही है या नहीं है तो मेरे को पता नहीं. मैं आ रहा हूँ क्या? आई एम ऑडिबल? हाँ आ रही है आवाज थोड़ी थोड़ी. मैम मैंने तो ये चीज सीखी ना अभी रिलेशनशिप्स के बारे में कि आपका एक बहुत बड़ा मतलब कि आप एवरेस्ट पे या किसी माउंटेन पे आप चढ़ रहे हो और सामने वाला जो आपका पार्टनर है उस भी दोनों को हमें चोटी पे पहुंचना है. दोनों की जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जहाँ पे हमें पहुंचना है. वहां पे चलते चलते साथ में हमारा कुछ हो जाता है रोमांटिकली फिजिकली. हम लोगों ने मैम इस चीज को ओवर प्रायोरिटी दे रखी है फिजिकल रिलेशनशिप को. हमारा कोई दूसरा कनेक्शन नहीं होता. मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इस टाइप का कोई पार्टनर मिलता है ना जिसकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा बहुत बड़ा मकसद है, तुम्हारी लाइफ में भी है, दोनों साथ में चल रहे हो, वो अपने रास्ते चल रही है, तुम अपने रास्ते चल रहे हो, बीच में कुछ हो जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है. बट इस चीज को ना प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए और चीजों के ऊपर नहीं देनी चाहिए. जैसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. और इनके पास वापस आ रही है तो अब ये सोच रहे हैं इस बारे में कि यार मैं उससे बात करूं ना करूं. ये चीज मतलब इतनी ज्यादा नॉर्मल होनी चाहिए थी कि हाँ बात कर लिया और खत्म कर दिया. बट ऑब्वियसली उसको अभी भी इम्पैक्ट हो रहा है ना. नॉर्मल तो तब होती है जब शायद लड़की के लिए नॉर्मल है क्योंकि वो चली गई थी. जो चला जाता है ना उसके लिए ज्यादा इजी रहता है. जो रह जाता है उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो मे बी स्टिल ट्रबल्ड एंड इट टेक्स टाइम बट इट टेक्स गट्स ऑल्सो टू से ओके आई डोंट वांट टू मेक अ कन्वर्सेशन, आई डोंट वांट टू रिविजिट द पास्ट, देयर इज नथिंग ओवर देयर. सो या लव इज डेंजरस एंड टॉक्सिक पीपल आर ब्यूटीफुल yet dangerous. Yes, so yes ma'am, we have spoken. Okay, okay. So I think I've answered all the questions. I don't believe in astrology, actually speaking. So whoever asked me this, because I prefer just making my decisions instead of depending on anybody. I just do the best that I can. And if I fumble, if I make mistakes and my life is not working out properly,
मैं yes I am spiritual and I guess I मेरे लिए साई मैं शिरडी साई की भक्त हूँ तो मैं उनको प्रे करती हूँ that's about it yes I like most of us हम Indians हैं तो we carry that culture of religion and puja पाठ and I do that but I try not to get too carried away it's not इतना ज्यादा जितना डीप जाते हो उतना तुम्हारे मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है अगर से इतना इजी होता टू प्रिडिक्ट एवरीथिंग अबाउट आवर लाइव्स फिर क्या तो बात थी बल्ले बल्ले हमको सब पता होता और life wouldn't be so intriguing and mysterious, right? If everything we knew. So that is the thing. Okay, so guys, I shall take your leave. Okay, it's almost 11 o'clock here and I am exhausted, but I am very happy to have you all here. It's so Aditya, आज तुमसे text कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, बात करना है? और वैष्णवी आपने बात ही नहीं किया बेटा. Any questions you have? Anything I didn't answer? I know you're there from the beginning of the stream, so if I can help you or there's anything you like to say, please go ahead. Then now would be the time. नो मैम, बस आज इस सेशन अटेंड करके काफ़ी अच्छा लगा और वैसे भी मेरे एग्ज़ाम्स चले गए तो बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था एग्ज़ाम्स में फॉर्चुनेटली, तो आज मैंने सेशन अटेंड कर लिया तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो गया, आज बढ़िया हो गया. और सारिम के गाने से और भी. सारिम ने यहाँ लिखा है इंस्टा पे, जूम छोड़ के इंस्टा पे पहुंच गए. आई एम फीलिंग लाइक इट्स माय बर्थडे. इतना अच्छा लग रहा है. थैंक यू सारिम, थैंक यू फॉर ऑल द सॉन्ग्स एंड द पोएट्री एंड ऑल ऑफ दिस वंडरफुल व्हाट अर्चित wrote about me. It was like really fabulous. And Mega remembered my birthday and she had sent me a cute card. I think it was a GIF or a card. I can't recall. But beautiful words as usual. Thank you, Mega, for it. And all of you all, and Aryan beta, apna dhyan rakhna. Thank you for your poetry. I'll call you or text you like about whatever it's. Yes, of course. And just give me your email. At least that I can send. Try my best. Okay. Bye, ma'am. Okay, thank you. Okay. Bye, beta. Okay, bye. Bye, ma'am. That was a refreshing stream. Thank you for insights. My pleasure. अपना ध्यान रखो. अनमोल सिंह और बालाजी मैम, when would we, sorry I missed some questions. When would we have your birthday celebration? ये birthday celebration stream नहीं तो था. हाँ, मैंने कुछ और बोला था ना तुम लोगों को. पर थोड़ा मेरे को प्लानिंग करने दो. थोड़ा मैं और frequently आऊंगी ना, then I can. I'm planning to go to Egypt. Sorry, countries क्यों mix करते रहते हो? Egypt नहीं, Turkey, and then let me come back and. Ma'am, happy birthday, ma'am. Love your synergy. Thank you, Abhinav, for your wishes. Thank you, Sani, for your birthday wishes. Thank you all. And who wrote? Anmol, apna dhyan rakhna beta. And I don't know, Balaji. I'll let you know. I'm not really sure what I'm planning to do and when. This was just impromptu. Love you all. Thank you for the love and the support and for being there. I thought कि आज barely like आधे घंटे की स्ट्रीम होगी, मुझे लगा लोग आएंगे नहीं. I was very surprised. हम 3 घंटे से बात कर रहे हैं. So Ishan forgot my birthday also. So but he wrote something very sweet. So that was very nice. Love you lots also. Aryan, take care, ma'am. Love you loads. Mega, love you a lot, mom. Aryan, say all of you all. Thank you. God bless you. ऐसे ही खुश रहो, अपना ध्यान रखो, और obviously whenever you're troubled, I'm there for you all as much as possible. And जुन का मैंने messages reply नहीं किए, मुझे माफ करना, मैं busy थी, but I'm getting back to my own schedule धीरे धीरे, and I will reply to all of you. Okay, bye, good night. I'm ending the stream.